Hello, hello, hello. Welcome back. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ भाई, crazy amount of transfers हो रहे, तो भाई अच्छा मौका था to get our special panel back. That is Z bhai back in the house. Z bhai, a lot of it happening in the transfer window. कैसा चल रहा है summer अभी, early summer days for the transfers? परफेक्ट परफेक्ट अभी तक तो सब सही है। मतलब दुख दर्द पीड़ा तो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका था मेसी के ट्रांसफर्स के बाद। एंड देन अभी विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि भाई क्या होगा। किलियन एम्बाप्पे एज वेल कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जूड बेलिंगम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, सो विल हैव टू वेट एंड सी। अ लॉट ऑफ फन टू बी हैपनिंग स्टिल। काफी समय बचा है, अभी देखते हैं। खैर अभी तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट्स जस्ट स्टार्टेड हाँ यार। मतलब हु नोज, मतलब जो प्री ट्रांसफर सागा था, मतलब स्पेशली मेसी सागा, उसका रिएक्शन आई या नो वी स्पोक, आई थिंक हमने बात की थी जस्ट अ डे बिफोर इट हैपेंड, आई रिमेंबर, एंड देन इट या हैपेंड। बट obviously we all know that we wanted मतलब Messi to stay in Europe. मतलब anyone who's not a Messi fan also would not deny that कि कहीं ना कहीं Ronaldo Messi leaving Europe is a big change of an era for sure. लेकिन मतलब in a very strange way it's not as bad for Barca as what it looks like. I know एक disappointment तो है, लेकिन it's not as bad, right? Because it was more like Barca were in a project anyway. वो आता है तो it's obviously an add-on, right? वेल ऑनेस्टली सही है। मतलब इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। आई मीन वी वर लाइक looking forward to it. Like obviously we were looking forward to by Messi coming back to Barca, but then जो हुआ वही है। मतलब इतना बात कर ले उसके बारे में अंकित भाई कि अभी इस पॉइंट टाइम पे ना ऐसे नंब लगता है। लाइक व्हाट मोर कैन यू से अबाउट दैट। एंड देन अगेन ठीक है, हो गया, ही हैज गॉन देयर एंड नाउ वी विल फोकस ऑन बारसा एंड व्हाट दे विल साइन। कुछ को वो लाते हैं, वो अलग से दर्द है। सो या ऑल डन बिल्कुल विद दैट। बिल्कुल। By the way, guys, I have some breaking news for you. तो भाई बंदे रहना यहाँ absolutely, and we'll be discussing literally भाई इस साहब stream में about every club, absolutely every club के बारे में discuss करेंगे, transfers in out, rumors हम rate करेंगे, as well as opinion about obviously एक और बड़ा सागा, एम्बापे सागा। मोहम्मद साना was in the house, Messi is good in the house, Abhishek, the all rounder gaming, रोहित, देवेश भाई, सब लोग जुड़ गए, केशव ऑफ कोर्स इन द हाउस एज वेल। सब लोग जल्दी जल्दी लाइक बटन दबा दीजिए, एंड अगेन बिग शाउट आउट टू जी भाई चैनल्स एज वेल। बाय द वे हम ऑफ स्टेज अभी बात ही कर रहे थे दैट वी हैव टू मीट, एंड आई नो मैंने या भी प्रॉमिस किया अपने ऑलमाइटी फैम से दैट समर मीटअप इज पेंडिंग, और समर एंड नहीं हो जाए उससे पहले मीटअप करना है। तो भाई अच्छा बात है, जी भाई से भी बहुत दिन से बात हो रही है। We have to do it very soon, and that's something that is या definitely on Licha Red OP in the house as well. Yes, absolutely, let's do that, Devesh। तो भाई सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज मैं बता देता हूँ सब लोग को, और भाई फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स, एवरीवन फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स यार, दिस भाई इज साहब सम ब्रेकिंग क्या हो न्यूज रहा फॉर श्योर। है? Timoyo Bakayoko leaves Chelsea, finally bro, finally। अरे भाई Bakayoko साहब leaves Chelsea, भाई खुशी मनाओ, पार्टी टाइम फॉर चेल्सी फैंस। कहीं ना कहीं भाई बंदे पता नहीं, मतलब मान जी मान भाई, रिमेंबर वी ट्राई टू रिप्लेस Ramirez and a Matic with Timoyo Bakayoko। या मतलब it is arguably along a drink water one of the worst signings in midfield for the Premier League, right, in modern era। एब्सोल्युटली या पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ सकता कि व्हाट दिस गाय वाज साइंड फॉर। एंड ड्रिंक वाटर अच्छा प्लेयर था यार लेस्टर पे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली, मिनट्स भी नहीं इट्स अ मिले और चेल्सी खेल थिंग ना, नहीं वो पाए समर याद बाकियों है, को। हमने ड्रिंक हाँ वाटर, बाकायोको, और फिर जनवरी में हमने बार्कले को साइन किया था। दीज थ्री बार्कले, हाँ साइन, तीनों रॉस मिलाकर बार्कले 100 स्टिल मिलियन। डिड बेटर। हाँ रॉस बार्कले स्टिल डिड बेटर हाँ देन दीस टू। भाई साहब फाइनली अल्टीमेटली बाबा खुशी मनाओ यार। बाकायों को जा चुके हैं, लेजेंड ऑफ द गेम, लेजेंड ऑफ चेल्सी। भाई साहब कांग्रेचुलेशन अंकित भाई। अरे यार बिल्कुल, और टू बी ऑनेस्ट इवन फॉर मिलान यार कहीं ना कहीं गुड रिडेंस है भाई। बाबा रहमान इज स्टिल देन, विल बी कमिंग बैक टू चेल्सी फॉर श्योर। लेकिन यार जोक्स अपार्ट, obviously the talk of the town is Mbappe after the Messi saga। भाई Mbappe ये क्या, मतलब ये सास बहू का स्टोरी में बोलूंगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ, एंड ये तीसरा कौन बेसिकली वो पति पत्नी और वो वाला सीन है भाई। मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब बिटवीन एम्बापे, पीएसजी इन रियल मैड्रिड, मतलब वो रियल मैड्रिड कम्स बैक अगेन एंड अगेन। हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ होना ही है, और इसको लेटर वो सब लिखने की क्या जरूरत थी। आई अंडरस्टैंड दैट ही हैड टू मेक अ डिसीजन बिफोर ऑगस्ट, बट इट इज अ क्लियर थिंग फ्रॉम हिम। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीआर है, एंड ही इज ट्राइंग टू गेट अ मूव, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। नहीं, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली अंकित भाई, लाइक आई वाज लाइक सरप्राइज कि मतलब कि अगर अगर तूने लेटर नहीं भेजा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब लेटर भेज के व्हाट आर यू शोइंग। मतलब पीएसजी को तुम बता रहे हो कि भाई देखो मैंने 1.5-2 महीना पहले ही, मतलब मेन ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होते ही आई हैव इन्फॉर्म्ड यू कि भाई आई डोंट वांट टू साइन एन एक्सटेंशन, और बट मैं रुक रहा हूँ।
what a dick move that is. ये क्या कर रहे हो तुम, ये पागलपंती है. So apparently what Mbappe tried to do was कि अपना एक strong move play करे, so that he has the leverage. Maybe he's trying to force PSG into giving him a better contract, or he's trying to show PSG कि भाई देख, ultimately I stayed through Respect. it of my contract, मुझे respect हाँ. है, so you can't boo me. मैं रुक रहा हूँ, but I'm not gonna stay longer than this. So जितना था हो गया. एंड बस इसके अलावा मैड्रिड आती है या कोई भी टीम आती है, वो डील करती है मेरे से, तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड इफ यू वांट टू सेल मी और इफ यू वांट टू कीप मी. इट्स अप टू यू. अगले साल मैं पक्का जा रहा हूँ. सो भाई ये इतना स्टनिंग मूव है जो किलियन ने प्ले किया है, एंड उसमें ही इज कमिंग आउट एज द इनोसेंट गाय. ही इज द इनोसेंट गाय इन ऑल ऑफ दिस, एंड इट्स अनबिलीवेबल. मतलब वो ये बोल रहे हैं, मतलब मेसी इज गोट इज आल्सो सेइंग इट्स अ पीआर स्टंट. लिचा तो बोल रहे डायरेक्टेड बाय बेंजेमा, प्रोड्यूस्ड बाय पापा पेरेज. भाई बेंजेमा अगेन हम वही बात कर रहे थे ना, मेसी मेसी की कहीं ना कहीं बेंजेमा मेसी बोथ नॉट बीइंग इन यूरोप काइंड ऑफ, मतलब इट बी अ रियलिटी चेक यार, इवन फॉर व्यूअर्स लाइक अस, फॉर फैंस लाइक अस. लेकिन देखिए मतलब आई अंडरस्टैंड टोटली दैट हिम रिस्पेक्टिंग दैट और इवन ट्राइंग टू से दैट. और यहाँ पर एक चीज देवेश ने याद दिलाया भाई, ही इज को ओनर ऑफ पीएसजी. Yeah, मतलब yeah. फुटबॉल कैन टर्न सो क्विकली, समटाइम्स वी रियलाइज ना. अब देखिए पीएसजी ट्राइंग टू गेट हिम ऑफ, मतलब ऑफ द चेस्ट, मतलब वो कौन इमेजिन कर रहा था भाई, मतलब आई वुडंट हैव इमेजिन दैट. मुझे याद है मतलब another France, wide forward, Florian Malouda, exactly 10 years Yeah, ago हुआ था. Florian Malouda. Florian Malouda जब चेल्सी में था, मतलब he was actually quite good. मुझे Yeah, very personally, good यार अंकित भाई. फ्लोरेंस yeah, मलूडा, वो भाई him क्या and याद दिला Ribéry दिया on the आपने. wings, everyone remembers for ओए France, right? They were सीरियसली. quite good in fact. लेकिन मेरा थोड़ा ये attachment इतना ज्यादा नहीं था with Florian Malouda. Why? Because he replaced my favorite player for Chelsea, that was Robin, in a अच्छा strange way, ठीक right? है. तो वो हाँ थोड़ा था. हाँ. लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट बेनिटेज जब था आया था ना, तो ही एक्चुअली डिड दैट, लाइक यार तू निकल जा, नहीं तो यू विल रॉट इन द एकेडमी. एंड बेंच ही पे एक्चुअली डिड एंड दैट. तो हाँ. Obviously, ओ भाई. obviously, Mbappe का तो nowhere close we can do that, especially at that wages and of course among the best players in the world है. But worst case scenario क्या होगा, मतलब PSG definitely are saying कि नहीं भाई तू निकल जा, whatever it is. अभी भी फेब्रिशियो ने कंफर्म किया आज ही that whatever it is you need to go. And meanwhile Manchester United का ownership जो हो रहा है, and of course things are changing. Ratcliffe versus Sheikh. तो अगर शेख. दोनों चीज में होता है, so for example Sheikh, there is still news that at least वो लोग ट्राई मारेंगे, डेफिनेटली ट्राई मारेंगे, बिकॉज आई नो हिज प्रेफरेंस इज रियल मैड्रिड गिवन अ चॉइस, वो ऑल्दो नकार रहा है, लेकिन वो ट्राई मारेंगे कंसिडरिंग दैट. आप अगर देखो तो इवन फुटबॉलिंग वाइज में आई फील पर्सनली, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, एवरीवन चैट में भी बोलिए दैट अ रैशफोर्ड एंड एम्बापे कैन प्रॉब्ली वर्क स्लाइटली बेटर कंपेयर टू विनिशियस एंड एम्बापे, बिकॉज दे कैन स्वैप पोजीशंस इजी. आई नो विनिशियस कैन प्ले एनीवेयर इन द फ्रंट थ्री, लेकिन रैशफोर्ड इज मोर कंफर्टेबल प्लेइंग अप फ्रंट अगर उनको स्वैप करना है इन बिटवीन गेम्स. आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. पता नहीं, मतलब अभी तक मैंने ऐसे इसको टैक्टिकली सोचा नहीं है, बट या रैशफोर्ड टू प्ले विद किलियन एम्बापे, रैशफोर्ड को बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली उसका. रैशफोर्ड इज मोर ऑफ अ रनर. रैशफोर्ड को बॉल चाहिए फाइनल थर्ड्स में आउट वाइड, एंड ही कैन कैरी द बॉल एंड ही कैन रन विद द बॉल. विनीशियस की जहां तक बात है, विनीशियस इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रनर, बट विनीशियस इज आल्सो अ वेरी गुड क्रिएटर. राइट. विनीशियस अकेले क्रिएट करता है. रैशफोर्ड से मैं ऐसे डायरेक्ट चांस क्रिएशन नहीं देखता हूँ, नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ. आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑन द बिजनेस एंड ऑफ द बॉल जब मैं फाइनल एग्जैक्टली. और फाइनल थर्ड में विनिशियस बॉल थोड़ा फेंका हूँ. विंग प्ले ज्यादा करता है, विनीशियस नो सो. विंग प्ले ज्यादा करता है. ही स्टार्ट्स हिज रन डीपर. He राइट. starts his run deeper, and I think given Kylian Mbappe would be there. Kylian Mbappe भी आप देखोगे when he used to play, whenever he plays at PSG, at times he would drop deep, link up करके एक तो touches लेके, and then he would go and make runs in behind the defenders. I think दोनों ही एक दूसरे के साथ better खेलेंगे. Rashford को ज़्यादा benefit मिलेगा playing with Mbappe, because he can play 1-2s with Kylian Mbappe, and then ultimately Mbappe could be the guy जो कि Rashford को वो ball feed करे. But पता नहीं, still I would have, मुझे still I feel कि Vinicius and Mbappe would work in a better way, given कि अगर Vinicius likes to play as a striker, अगर वो he's playing as a 9, तो Vinicius को बहुत benefit मिलेगा उसका. So ओके. yeah, so अभी तक तो better than Rashford. I think Vinicius would complement him better, because Vinicius can turn in the creator for Kylian Mbappe as well, and vice versa. Rashford and Mbappe में it would be, the dynamics would be very strict. So maybe I could be wrong. इसमें और डिटेल में हाँ सोचना मतलब पड़ेगा. मतलब यू But हैव अ off my पॉइंट head, अबाउट,
हाँ मतलब डेफिनेटली आई एग्री, Yeah. मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन वो भी है ना, आप देखो द वे दैट एरिक टेन हाग प्लेज वर्सेस, अभी आई नो एंचेलोटी इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान अभी, मतलब मे बी डिपेंड्स ऑन हु वुड सक्सीड एंचेलोटी, वो भी एक Yeah. बड़ा क्वेश्चन है एब्सोल्युटली। रियल मैड्रिड फैंस नाउ आप लोग बोलिए, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है दैट एम्बापे इज सो यंग ना अभी, दैट ही कैन स्टिल मेक दोज मूव्स। आई नो दैट रियल मैड्रिड डोंट कम कॉलिंग एवरीडे, वो भी होता है, लेकिन अगर आप देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, इफ दे हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड दे नीड अ टॉप स्ट्राइकर, एंड राशफोर्ड का एक क्वेश्चन मार्क रहा है about him being that left forward or straight up, a center forward, which I still believe is a left forward more. Or Hmm. number 7, for whatever reason they have kept it available. अब वो those are things that we can discuss. वो हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, लेकिन meanwhile I know we'll come to Manchester United and EPL clubs as well. लेकिन ये भी न्यूज आ रही है that they are getting Greenwood back in the equation. मैं personally बहुत surprised हूँ. I know that he might not be guilty, whatever be it, लेकिन भाई there's no smoke without fire. वो clear थे Yeah, pictures, और absolutely. for a club like Manchester United to even give him a chance right now, कहीं ना कहीं वो आ बैल मुझे मार बोल रहे हैं, नहीं? Exactly, but we can't be the judge of it, Ankit bhai, because we don't know the full story. I think he has been Exactly. proven not guilty. तो फिर देखो चीजें तो हुई Hmm. थी उसके लिए, but shouldn't the guy get another second chance? So I'm nobody to talk about this. Obviously, इन चीजों के बारे में already बात मैं नहीं करता हूँ. I don't feel very comfortable talking about the non-sporting terms of football. But Correct. given what has happened, what he has done, if United feels that they can allow him to play, that he deserves a second chance, if United decides that, then I think they know what they are doing. नहीं नहीं, मतलब वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट ऑफ कोर्स, लेकिन वही है, मतलब वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सच केसेस, मे बी वही है, मतलब कहीं ना कहीं आर्सेनल का भी, आई रिमेंबर पार्टे आल्सो वाज इन अ सिमिलर थिंग, बट Arsenal did not want, जैसे आपने बोला ना, Yeah. they would like to see the footballing side of things, and that's why they kind of respected the things which are proven and went with Partey, and they completed the season and did well, in Hmm. fact. तो कभी कभी यार it's sometimes that the decision, a club needs to take a strong decision at first go, in my opinion, and वो change किया ना, that is a questionable for me. But Yeah. any अमृत क्या हाल है भाई? सोचो अगर राशफोर्ड पीएसजी जाए और वहां दे फॉर्म अ पार्टनरशिप, अरे भाई ये तो नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक क्या लगता है भाई? Yeah. PSG by chance, we all know eventually तो भाई Mbappe छोड़ेगा. The big question is whether this summer or next summer, and I don't Yeah. think he's going to extend. Whatever PSG fans also say, I don't see that वो extend करेगा despite being a नहीं Frenchman. करेगा. और तुराम और कोलोमोनी की बात हो रही है, what I understand, with the Bernardo Silva from Manchester City, or is what they're trying. Quite likely लग रहा है, in fact. मैं Man City, मतलब one of the ultras से बात कर रहा था आज, and they feel that Man City might actually lose Mahrez and Bernardo Silva both in the same window. I don't see it practically happening. Like if Man City, the ultra is actually seeing that, following a much more closer, in terms of the sources, etc. Plus, PSG obviously have lost Messi. कहीं ना कहीं, if they get a Bernardo Silva with a Colomwani and a Thuram, they can just change it, right? And Neymar भी निकल जाए, Messi भी निकल जाए, Mbappe भी निकल जाए. Ugarte as well. Yeah, Ugarte in midfield, of course, that helps. Asensio आ चुके हैं, Skriniar, Lucas Hernandez, man, they are forming another एक revolution. फिर से वो पूरी अपनी टीम चेंज करने के या लिए वो जा रहे हैं ली PSG, भी आया man. ना, Wow. साउथ कोरियन Ah, अटैकिंग ha, मिडफील्डर, आई थिंक ha, ही इज ha, आल्सो ha. देयर एज Kengen अ Lee. बैकअप टू असेंसियो, Hmm. एग्जैक्टली. Hmm. तो आई थिंक मतलब आर दे गोइंग, वही रीबिल्ड कर रहे हैं वापस से, मतलब दिस व्हाट आई एम Yeah, गेसिंग द प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाट दे आर that's what they डूइंग are सो doing. उन्होंने coach को sack किया है. Campos knows what he's trying to do, and then he's trying to get Nagelsmann, and then he's forming a good team so that if they get Nagelsmann, he will have a good squad to challenge आगे Champions League में, because that's one thing that they want to fight for. मतलब अगेन, मतलब बट व्हाट अबाउट नागल्समैन, द वे नागल्समैन बेसिकली अगर आ जाता है, द वे दैट ही प्लेड हिज फुटबॉल, मतलब आयरॉनिक नहीं, कहीं ना कहीं नागल्समैन बीट अ पीएसजी इन द लास्ट सीजन, मतलब एंड नाउ दैट ही इज गोइंग टू बिकम अ पीएसजी मैनेजर, लुक्स लाइक इट. मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन नागल्समैन टू पीएसजी? जस्ट एक होता है ना, मतलब आई थॉट ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी टू बी अ पीएसजी मैनेजर, मतलब डोंट यू थिंक But सो? that's what they need. That's what they need. They need a strong personality जो कि probably a manager who can smack them, the players, and क्योंकि वो बदतमीजी होती रहती है PSG पे, and I think नागलस्मैन का वहां जाना, being एक stern manager, लोगों को like direction दिखाना है, प्लेयर्स को एक डायरेक्शन दिखाना है. दे फील लॉस्ट, एंड नागल्समैन एक ऐसी ऑरा रखता है. नागल्समैन काइंड ऑफ कीप्स दैट control of the team. He has got that leadership as well. So probably that would work better for Nagelsmann, for PSG as well, and maybe
ये पूरा जो भी मूव कर रही है पीएसजी, शायद हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यूचर 2 सालों 3 सालों में कुड वर्क फॉर देम। नहीं नहीं एब्सोल्युटली। अमृत बोल रहे तौबा तौबा पीएसजी फैन बोल दिया मुझे। कौन बोला भाई आपको अमृत चिल मारने का? भाई कोई नहीं, इट्स ओके। पीएसजी के बारे में कुछ मत बोलना, दे आर लिटिल बॉयज नाउ भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वी ऑल नो एज मच एज पीएसजी वर ट्राइंग टू रीबिल्ड फ्रॉम क्वाइट ऑलमोस्ट अ डेकेड, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन द रियलिटी इज पहले नेमार प्रोजेक्ट, फिर एम्बापे, नाउ मेसी प्रोजेक्ट। लेट्स बी सेफ एंड से दैट जी भाई इट्स नॉट वर्कड इन द लॉन्ग रन, राइट? इट्स नॉट वर्किंग अंकित भाई। और आप ये भी देखो ना कि लाइक लास्ट ईयर दे सेड कि भाई नो फ्लैश फ्लैश ब्लिंग ब्लिंग, ठीक है, दे वांटेड टू वर्क एट इट, ठीक है, उनको चाहिए था भाई कि प्लेयर्स लाएंगे, मैनेजर गाल्टियर कोई बहुत ज्यादा हाइप्ड अप नाम नहीं लाया उन्होंने, एंड दे हैड मेसी एंड दे हैड नेमार, दे हैड किलियन एम्बापे, एंड दे थॉट कि भाई ठीक है विद सम अंडररेटेड साइनिंग्स लाइक विटिनिया, रोनाल्डो सांचेज हार्ड वर्क करेंगे। बट उन्होंने लाइक सब कुछ तुमने टीम में रखा, दे डिड नॉट। मुझे उनकी काफी ज्यादा आइडेंटिटी की प्रॉब्लम लगी। The problem, the crisis was of identity. The representation of the players, डिफेंस काफी बड़ा इशू था, मिस्टेक्स काफी बड़े इशू थे, क्लैरिटी इन द स्टाइल ऑफ प्ले काफी बड़ा इशू था एट टाइम्स। सो ऑल ऑफ दिस लेड टू देम गेटिंग आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। डेफिनेटली किसी तरीके से उन्होंने लीग जीत लिया। अब लीग तो यार वो खींच ही लेते हैं, नोबडी डाउटेड देम। अभी इस पॉइंट टाइम पे आप देख रहे हो दे आर एक्चुअली मेकिंग गुड मूव्स। अगर वो नागल्समैन को ला लेते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट मूव, बट इफ ही इज कमिंग he has to stay for at least 2-3 years. PSG can't go like changing managers and changing players every 1 year, every 2 years. They have to have someone जो कि वहां पे stay करके identity build up करे, and they have to decide now do they want to do it with Kylian or without him. They can't go stretching this next year कि नहीं भाई अभी 1 साल है Kylian के साथ खेल लेते हैं। You can't have a guy in your team जिसके already एक टांग बाहर है आपके क्लब से, and a guy like Kylian Mbappe, such an important player Yeah. like Kylian Mbappe, you They need to cannot have rely on him anymore, basically speaking. exactly, they shouldn't, like मैं PSG के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, and I almost sweat so much talking about PSG क्योंकि उनके फेवर में और उनके उनके एस्पेक्ट में बात करना, लेकिन so bad है। बट देन अगेन वो भी एक क्लब है और हम भी बीइंग क्रिएटर्स तो हमें भी उनके बारे में बात करना पड़ता है। बट कम ऑन मैन, PSG के बेटरमेंट में हम बात कर रहे हैं, सहा नहीं आता भाई लेकिन टू बी ऑनेस्ट लीगा के लिए भाई आई थिंक इट्स समवेयर डाउन द लाइन गुड यार फॉर लीगा एज अ लीग, राइट? आई नो कहीं ना कहीं यू हैव द स्टार प्लेयर्स देयर, बट आई थिंक द लीगा का जो बिटवीन, मैं काफी बार चैट से भी बात करता हूँ, दैट एज मच एज यू नो बुंडेसलीगा आई सर्टेनली पर्सनली रेट अ लिटिल बिट मोर, बट रियलिटी इज बुंडेसलीगा में फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्लोजनेस ऑल्दो दिखता नहीं है, देयर इज देयर बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड डॉर्टमुंड as well as Leipzig और आगे है। लेकिन I think लीगा में क्या है, between say the teams which is like third to seventh, I think that is much more competition for me, and that is something that अगर first और second भी अगर close आ जाए ना तो एक competition अच्छा देखने को मिलेगा, जो सेरिया में हमने देखा है था लास्ट 2 सीजन्स में। तो कहीं ना कहीं I think from a neutral perspective just to watch the football is good, but हाँ of course पैसा बोलता है that's what counts, the you know the players sell यार, मतलब let's be real definitely। about but it. I'm very disappointed in Bundesliga, very disappointed in Bundesliga. Like you help the mammoth of a club that Bayern Munich is, you help them, like अपने स्टार मैनेजर भेज दे रहे हो, अपने स्टार प्लेयर भेज दे रहे हो, तुम उनको लाइक गुर्रेरो वहां से छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, मतलब बैड मैन, दैट्स रियली रियली बैड। और जिस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिवनेस टीम के रखते हो, लाइक पूरे सीजन आपने देखा बायर्न म्यूनिच वो दे वर स्टम्बलिंग, दे डिडंट लुक लाइक देमसेल्फ। ऐसा बुरे सीजन में अगर डॉर्टमुंड या एनी अदर टीम नहीं निकल के आ पा रही है और नहीं चांस दे पा रही है, लास्ट डे पे एक मैच विन करके आप टाइटल जीत सकते हो एंड यू बॉटल इट, दैट इज बैड। एंड वो दुखता है, बहुत ज्यादा दुखता है। लाइक भाई इस बार नहीं किया ना, अगले बार फिर इम्पॉसिबल है, मेंटली बिल्कुल। आप टूट जाओगे। I agree. Somewhere down the line, you know, that is something that rebuild is not easy as well. Generally, ना अगर कुछ change करा, I think कहीं ना कहीं Bundesliga are not sure about changing क्योंकि they are very rigid in the sense, और वो चीज अब हमने बोला that कहीं ना कहीं that 51 49 50 plus 1 वाला जो है वो I think somewhere down the line, as much as it's great, you know, story, but मॉडर्न डे में डजंट रियली वर्क। बट भाई सब लोग यहाँ देख रहा हूँ मैं, काफी लोग यहाँ बारसा के क्वेश्चन पूछ रहे, चेल्सी के क्वेश्चन पूछ रहे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्वेश्चन पूछ रहे। वी आर कमिंग टू एवरी क्लब। आई थिंक वी स्टार्टेड ऑफ विद रियल मैड्रिड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पीएसजी राइट नाउ, बट जस्ट कमिंग बैक टू रियल मैड्रिड क्विकली, जी भाई, तो दे हैव लाइक अ फैंटास्टिक मिडफील्ड फॉर श्योर विद बेलिंगहम कमिंग इन। आई डोंट थिंक मिडफील्ड हैज बीन एन इशू फॉर रियल मैड्रिड कंसीडरिंग दैट क्रूस और मॉड्रिच भी अब एक्सटेंड कर रहे हैं। भाई मॉड्रिच क्या खेला भाई अदर डे, आई एम लाइक ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। बट
क्या लगता है, मतलब नाउ दैट स्ट्राइकर पोजीशन होसेलू, आई नो ही स्कोर्ड बट लेट्स बी रियल, ही इज नॉट अ स्टार्टिंग स्ट्राइकर, वो आने वाला है। तो अभी एज थिंग्स स्टैंड, बाय चांस से एम्बापे नहीं जाता है, हमने बात किया है द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम स्टेइंग एट पीएसजी एटलीस्ट फॉर अ ईयर और गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट अबाउट, अगर वो होता है विद द न्यू ओनरशिप ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, देन वेयर आर रियल मैड्रिड? बिकॉज केन तो मुझे नहीं लगता कि यार इट्स रियलिस्टिक हिम कमिंग, बिकॉज it's really difficult to get Daniel Levy, और I think 100 million के ऊपर for paying for a 30-year-old is also questionable, even if Yeah. you're Real Madrid. Yeah, that is questionable and Papa Perez ये नहीं करेंगे. He would not spend. वो Kai Havertz के लिए 40 million spend नहीं करना चाह रहे थे. जैसे उसने सुना कि Kai Havertz का asking price 60-70 है, कितना है? 80 था, कितना मांग रहे थे? I think Chelsea, I 60 don't million remember. pounds, which is 70 million euros, हाँ, I think, which हाँ. is fair enough for a 24-year-old who plays in multiple positions and Fair he's done enough, but decently. decently, yeah. But then it's too much of a price for Kai Havertz. मतलब nobody would agree with that price. अगर आप starter नहीं हो तो then obviously you will not pay that, and obviously in Real Madrid he Exactly. wouldn't have been a starter. That's Yeah, the yeah. So ये problem था I think Madrid का, but then very good that they didn't go for Kai Havertz because मुझे वो किस हिसाब से फिट होगा बड़ा dubious लग रहा था. Anyway, they need a striker, ठीक है, definitely after Karim Benzema going. अब there are strikers in the market, वो अब किसको लाते हैं ये बहुत बड़ा question है. 100 million euros for a Harry Kane would be way too much money. But then Harry Kane, he would fit like मजे से, like he would fit it very easily. कोई ट्रांजिशन कोई कुछ नहीं करना होगा. हैरी केन को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी टू फिट इन एट रियल मैड्रिड बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ कार्बन कॉपी टू करीम बेंजेमा. ही इज young abhi matlab like younger than Karim, 5 years younger than Karim Benzema, and he can still give you at least 3 years. जिस हिसाब से हैरी केन खेला, I don't see him slowing down up till at least 3 years. But then invest in a guy for 3 years, 100 million euros, it's too much. So what should they do? Yahin pe again you think about Harry Kane. Has he lost now the time to join a top club? Because everyone would think like, oh bhai banda 30 ka ho chuka hai ya 31 ka ho chuka hai, and even he's not easy to purchase as well because आपको Spurs को काफी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. So हाँ, Daniel Levy हरामी तो है बाबा, बिल्कुल सिंपल वैसे ही बिल्कुल है. भाई, And कहीं बिल्कुल. ना कहीं Kane should understand this यार. अभी Kane का I think 2 साल कॉन्ट्रैक्ट और बचा है स्पर्स पे, if I'm not wrong, or I think this is the last year नहीं that he'll नहीं, be having आई थिंक इज 1+1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दैट इज द थिंग. one. और बहुत बार हम Yeah, बोलते हैं विल कम टू चेल्सी एज वेल. मैं बेसिकली बहुत लोगों से डिबेट कर चुका हूं अबाउट मेसन माउंट, व्हाई ही इज एट अ सर्टेन प्राइस. भाई देखिए, हैरी केन विद 1 year रिमेनिंग एंड 30 year old, आई नो ही बैंग्स गोल्स फॉर फन, आई नो डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर, एक्सपीरियंस लीडरशिप लाता है एंड ऑल दैट, बट 1 year रिमेनिंग, 30 year old and Spurs demanding 100 million, if that is now not robbery, then why is Mason Mount robbery? Just saying. But यहाँ पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ that let's put it this way. You have Harry Kane, 30-year-old, 100 million, Zibai, or you have a Kolo Muani, jo again, because PSG, we all know that they don't want to sell Mbappe to Real Madrid as well because of things which happened in the media between last 6 months. So maybe just वो कोलोमानी को टारगेट करे तो भाई रियल मैड्रिड हम ले लेंगे कोलोमानी might also be around the same price, much younger guy who could play multiple positions, somewhere like a young Higuain, if you remember. yeah, yeah. Would that make more sense, मतलब from a Real Madrid perspective, अगर आप सोचो तो? Yeah, Colomani won't be a bad signing for Real Madrid. I think बंदे के पास वो ability है to play at the top level. But मुझे कहीं ना कहीं Madrid वाला step थोड़ा सा soon लगेगा उसके लिए, because Madrid पे it's either make or break. And a striker coming in at Madrid, मुझे लूका जोविच vibes आ रही हैं उससे. If I mean बंदा अगर थोड़ा सा भी फॉर्म थोड़ा खराब रहा स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस में, and then he's not able to pick himself up, then वहां से करियर उसका डाउनहिल जाएगा. We also what happened with Luka Jovic, Eden Hazard as well. चलो तो later part of the career में हुआ, but Colomani इस point of time पे I think he would be fit at Real Madrid पहले तो, and प्रेशर काफी रहेगा उस पे. बाय द वे एनी टीम व्हिच ही गोस टू प्रेशर रहेगा, बायर्न हो, मैनचेस्टर हो, प्रेशर रहेगा. बट मैड्रिड को बड़ा क्रिटिकली देखा जाता है, एंड मैड्रिड डजंट गिव टाइम टू द न्यू प्लेयर्स, सो मच टाइम टू अ न्यू प्लेयर. यू माइट स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉन्गर दैन यू शुड. आपको ज्यादा टाइम मिल सकता है लॉन्गर यूनाइटेड पे आपको शायद प्रूव करने का, बट आई गेस Madrid पे not so much. So Colomani, if he comes at Real Madrid, would be good. Yeah, I think it would be good, but maybe Madrid would go for, let's say, an Asumian or maybe a Lautaro Martinez, पता नहीं, but they need someone. Yeah, Osimhen, I'm really doubtful यार. रूडी गार्सिया आया है वहां पर, I know रूडी गार्सिया, मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं बोलूंगा because we all know Italian clubs, go for basically हाँ, थोड़ा बहुत tried and tested in the Italian league, और ये बंदा है experienced manager, they go for Roma, experience more than young guns. yeah, तो yeah, yeah.
he'll need Osimhen यार, मतलब statement भी आया, I think that he's probably going to be building around Osimhen. I know that is an obvious thing. I think Hoyland again, भाई लिचा देखिए, यहाँ पर आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बहुत लिंक हुए है. द आस्किंग प्राइस ऑफ एटलांटा इज समवेयर क्लोज टू 80 मिलियन यूरोज, एंड दैट्स आई थिंक अ बिट टू मच. बहुत ज्यादा, देखिए, बहुत ज्यादा. he sounds like a Haaland in terms of the name. He's a left footed striker और काफी मतलब अच्छा मूवमेंट है उसका, लेकिन अभी भी यार he's not got those numbers as what Haaland was getting when Haaland came to the Premier League. So I don't think that you can expect if you're Atalanta, to be honest. But again, who knows, right? मतलब a young striker is something great. And remember, Real Madrid के पास I know 18-year-old है Enric, but कहीं ना कहीं मे बी 1.5 साल बाद में he will be coming into the team as well. So I think they need, I think someone is experienced right now is what I would guess. Again, Firmino is something. आज सुनने में आया that basically जेको भी जा रहा है यार, मतलब इंटर मिलान से, आई थिंक. सो ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द 1 year extension. तो विद लुकाकू आल्सो लाजियो जा रहा है. चेल्सी, हाँ, तो Yes. बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही है चेल्सी इस बार, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट लुकाकू कमिंग बैक, बट आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट यार इंटर को मतलब फ्री में लोन नहीं दे रहे अगेन, बिकॉज़ वी नॉट टेकिंग एन एल सो मच एज वेल. तो वहां पर इंटर मिलान मेक्स मोर सेंस फॉर फर्मिनो. Probably makes sense. Yeah. तो आई थिंक Lautaro रियल Martinez को मैड्रिड, बहुत बेनिफिट मिलेगा. ओ भाई साहब, could just imagine. Yeah. Wow, that would be terrific यार अंकित भाई. बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक रियल मैड्रिड में लिंक तो हुआ था, लेकिन ऑन बार्सिलोना एज वेल. बट आई फील दैट नाउ दैट जेको इज गोइंग, आई थिंक इट्स अ श्योर शॉट स्टार्टर यार, मतलब दैट्स अ हाँ, थिंग अबाउट फर्मिनो. आई थिंक प्रॉब्ली अगर वो फर्मिनो, जाता है तो. लतारो मार्टिनेज, अगर फर्मिनो फिट है, that partnership would kill. मतलब मुझे स्टैरिज सोरेस वाली वाइब्स आएंगी इससे फिर तो. Can imagine. बिल्कुल. सादिक भाई व्हाट्सअप जीरो लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट, बट ये सही अंकित भाई, आप मांगो तो सही, एटलांटा मांगे तो गलत. ओके ओके, नहीं नहीं, आई हियर यू एब्सोल्युटली भाई. देखिए देखिए, ऐसा है ना, basically when you're talking about Italian clubs, and you know Sadik bhai, I love an Italian football, generally the way that they go about things, but somewhere in Europe that is a thing. अगर आप इंग्लिश क्लब को बेच रहे हो, या बेसिकली रियल मैड्रिड एनी बिग क्लब को बेच रहे हो, यू आर डिमांडिंग 3 times द मार्केट वैल्यू समटाइम्स, लेकिन आप खरीद रहे हो तो आप हाफ में मांग रहे हो. क्योंकि पुलिसिक यहाँ पर टॉकिंग अबाउट इटालियन क्लब्स, एंड आई एक्चुअली वाज अ फैन ऑफ पुलिसिक जब लैम्पार्ड फर्स्ट स्टिंट में लॉकडाउन एरा में था ना. आई रियली लाइक पुलिसिक, उस समय अच्छा भी करता था खैर, और यूएस के लिए अच्छा भी करता है. बट आई थिंक पुलिसिक एट हिज एज, Juventus are wanting him at 20 million. Like seriously, bro. He's like 24-year-old and he's actually a very decent player. He could sell you so many jerseys. So वहां पर थोड़ा Italian clubs का I would say that double standards होते हैं. But that's football. We all know that, bro. We all know that. But yes, let's get to 300 likes, everyone. तो भाई मैं काफी स्टार भी करो comments यहाँ पर थोड़ा बहुत. We'll come back to Real Madrid, PSG as well as Chelsea. But बारसा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. Of course, जी भाई being here. Laporta meeting Baladi Express chairman for sponsorship deals. Amrabat is in pole position for the CDM role at Barca. Barca also interested in Lo Celso. Yes, मैंने पढ़ा है. I think Xavi is looking for someone for the final pass between the midfield and the forward line. क्योंकि all of a sudden Gundogan might be accepting 1 year extension. That is something which is happening as we speak. फिर भी पता नहीं क्यों ही तो कोवाचिच फिर भी जा रहा है. I have no idea. But क्या लगता है यार, मतलब Amrabat has been linked very strongly to Spurs in the last 2 days as well. तो देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट सेइंग कि यार या तो स्पर्स या तो बारसा. और अगर गुंडोगन नहीं जाता है, वेरी डिफरेंट प्लेयर ऑफ कोर्स अमराबात, बट क्या लगता है, मतलब अमराबात विद लो सेल्सो मेक्स मोर सेंस दैट कॉम्बो, और यू वुड वांट लाइक समवन लाइक जुबीमेंडी प्रोफाइल प्लेयर हु कुड डू बिट ऑफ बोथ. जुबिमेंडी नहीं आ रहा है अंकित भाई, टू बी ऑनेस्ट, है ना. अब हमें चाहिए भी नहीं. उसने बहुत बकवास कर ली है, बहुत ज्यादा बकवास कर ली है. एंड मेरे ओपिनियन में इफ गुंडोगन, पहले देखो मैं सिंपली गुंडोगन मैं चाहता था, ऑनेस्टली गुंडोगन आई वांटेड हिम टू कम एट बारसा. इफ विद दैट एक्सपीरियंस, विद दैट क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, वो डेफिनेटली नीडेड था. बट अगर गुंडोगन स्टे कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, देन इट्स ऑन टू हिम. बट देन अगेन पेप गुंडोगन के होते व्हाई ही इज गोइंग फॉर कोवाचिक, मुझे तब समझ में नहीं आ रहा है. दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. सो आई थॉट कि भाई कोवाचिक के लिए इसलिए जा रही है सिटी क्योंकि वो गुंडोगन लीव करेंगे, वो उनकी इंटरनल बातचीत हो गई होगी. ही हैजंट जस्ट टोल्ड. So अब बारसा के पर्सपेक्टिव से if you don't sign Gundogan, and अगर बारसा Los Celso से injured है playing on that left sided role, midfield के left side interior, it's actually very good. It's actually very good, to be honest. तो
I'm happy. मतलब मुझे ये न्यूज़ पता नहीं थी Lo Celso के बारे में. मैं तो अभी आए, अभी मतलब I was reading, in fact okay. multiple reports are saying. So the thing is, the idea is actually not Lo Celso in particular. He likes Lo Celso, and that's multiple reports, मतलब वही, there's no smoke without fire, multiple reports saying. But at the same time, I think the bottom line is Xavi is looking for that profile of a player who's basically Yeah, the, connect. अब कहीं ना कहीं Gavi is brilliant, but Gavi cannot do that role if you're really being honest. एग्जैक्टली अंकित भाई, ये बात तो आई डोंट नो इफ यू वुड हैव हर्ड दिस फ्रॉम मी और नॉट. मैं कह रहा था कि बारसा जिस स्टाइल ऑफ फुटबॉल में खेल रही है, द 3-box-3 रोल, the most important player for Barcelona right now are the two number 8s in the team. And that I said when Busquets was already there in the team. Now that Busquets is gone, मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो चुकी है टू अ डीएम. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो Correct. सादिक भाई कह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइडेड इंटीरियर के रोल में खेलेगा ना, ही इज ब्रिलियंट. जस्ट द थिंग इज कि वो भाई उसको इंजरी हो जाती है एट टाइम्स, बट ही इज अ क्वालिटी प्लेयर. हमने उसको देखा अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए, हमने उसको देखा विलेरियल पे खेलते हुए. ही इज द सोल क्रिएटर इन दैट टीम. एंड ऑनेस्टली वी कैन साइन हिम फॉर अ वेरी लेस वैल्यू टू. हाँ ठीक है, स्टिल आई वुड हैव प्रेफर्ड Gundogan. I mean, Gundogan has achieved everything at Manchester City. Correct. Treble वो जीत next चुका है, सब level कुछ है, मतलब let's be real नेक्स्ट about लेवल it. था. तो Gundogan to Barca would have made very good sense for him as well, for us as well, given that quality, that experience of a guy is coming. But Lo Celso, if you're going for him, won't be the worst signing. It would actually be a brilliant signing, a great move, because he's the guy that we would need in that final third. हमारे पास जो आप कह रहे हो ना, गावी की वो प्रोफाइल नहीं है. डेफिनेटली वी नो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि फाइनल थर्ड में वो पासेस डालेगा. पेड्री Right. इज जस्ट द लास्ट गाय दैट वी कैन पिक. एंड होपफुली लो सेल्सो या उस प्रोफाइल का एक प्लेयर जो एक नंबर 8 है, जो बॉक्स को ऊपर मिक्स करता है. डाउन के दो जो ये पिवट्स हैं, एंड अप के जो दो ये कंप्लीशन ऑफ द बॉक्स होते हैं. यहाँ पे वी नीड पेड्री, वी नीड समवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हाफ स्पेस, एंड दैट कुड बी लो सेल्सो. एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली. Yep. Makes sense. हर्षा पूछा why can't Barca sign any player like Madrid as they reduce the salary cap? I think यहाँ पर Laporta ने statement दिया है that there is still a need in terms of reducing some wages. I think that was the thing, सेल disagreement करना है between पहले Messi. हमें. Right. तो I हाँ mean नहीं, I we have reduced our salary cap, but we haven't reduced it substantially. हमें 200 मिलियन यूरोस कम करने हैं. देखो और ऐसे करने होगा ना, आपका 400 का वो है, ठीक है, जो आपका लेवल है, आपको 400 यूरोस पे रखना है, तो आप 600 से 400 पे ले आओगे. बट प्लेयर साइन करोगे, वेज दोगे, तो 400 के ऊपर ही चला जाएगा ना. तो पहले आपको 400 तक लाना है, एंड आपको उसको घटाना है. सो लगभग लाइक 350 तक आप आ जाओगे. देन आप उस बचे 50 मिलियन यूरोस में आप जो साइनिंग करोगे उनकी वेज बिल फिट करोगे. बिकॉज अगर आप 400 यूरोस तक रुक जाते हो एंड देन प्लेयर साइन करते हो, तो भाई रजिस्टर कैसे करोगे उनको. सो दैट्स द थिंग. बारसा पास पैसे साइनिंग के होते हुए भी प्लेयर को साइन नहीं कर सकते, बिकॉज उनको वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वेज बिल फिट नहीं होगा. अलग लेवल का सीन है भाई, यहाँ पे दिमाग खराब. Yes, absolutely. Again भाई सब लोग यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई एम अगेन सेइंग फॉर पीपल जस्ट ज्वाइनिंग, भाई काफी क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वी आर गोइंग क्लब बाय क्लब सो दैट वी हैव सम. भाई यहाँ पर वी डोंट वांट टू डू अ रैंडम ट्रांसफर टॉक जो अपने बोली भाई साहब करते हैं. वी ऑल नो हाउ ही डन हिज ट्रांसफर टॉक्स और रादर ट्रांसफर परचेजेस लास्ट समर में. तो होपफुली विल नॉट डू दैट इन द स्ट्रीम, लेकिन हम विल बी कवरिंग एवरी क्लब एज वेल. एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या है अभी, मतलब Lo Celso is one option for sure. Gundogan हाँ, was one option. मैं तो और अभी भी ऑप्शंस बोल रहा ढूंढते हूँ हैं. भाई, मतलब why didn't Barca go for a Chelsea player? मतलब I feel that I know Kovacic is next Real Madrid player, but I feel that that could have been a not a bad one और ज़्यादा expensive नहीं होता. But anyway, maybe you're looking for a deal where you don't have to spend upfront money. I think you're या looking at a free transfer kind of thing almost. फ्री तो वो एक ट्रांसफर और समवट लाइक 2015, लाइक मतलब गुंडोगन हमारे लिए नो ब्रेनर था. हाँ, I Gundogan said was a it no a lot brainer. of times. By more than Leo, I want Gundogan in the team. No brainer था, क्योंकि एक फ्री में एक बंदा ऐसे क्वालिटी का अगर आता है तो नो ब्रेनर था. बट देन अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आप कोई भी प्लेयर को साइन करना चाहोगे उस एरिया में, गैब्रियल वेगा वुड बी टेरिफिक फॉर अस. मतलब कम ऑन यार, इतना मैं प्यारा बात बंदा करना है चाह वो रहा था यार. उसके बट बारे में. यू नो व्हाट आई आई फील आई वांट टू टेक योर ओपिनियन. गैब्री वेगा हैज बीन लिंक्ड टू चेल्सी, न्यूकासल एंड बार्सा. ठीक है, तीनों ही या है टू बी ऑनेस्ट. लेकिन मतलब आई पर्सनली फील दैट गैब्री वेगा वही है, मतलब कहीं ना कहीं ही इज आई थिंक अ बेटर वर्जन ऑफ अ गावी इन टर्म्स ऑफ द पासिंग दैट ही डज. बट इज ही डिफेंसिवली दैट guy that you need right now, मतलब to be नो, a ही इज starter in नॉट अ Barca? डिफेंसिव गाय अंकित भाई. नहीं, Number वो 8, वो I would put him more like a number 8 more than a number 10. yeah, he's a number 8. Yeah, he's a number Hmm. 8. Lately he played in a 4-4-2 as the front two Correct. striker. तो वो because he's so good in the final third in terms of
फाइनल बॉल डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ फाइनल एग्जीक्यूशन, आई थिंक बहुत ही फाड़ बंदा होता है, एंड यू कैन इवन मोल्ड हिम टू प्ले इन दैट नंबर 8 रोल. द थिंग इज कि बंदे का रिलीज क्लॉज 40 मिलियन यूरोज है. बारसा वोंट स्पेंड दैट मच मनी. एंड यस, मुझे पता है, मैं कहा हूं कि भाई मुझे एक्सपीरियंस चाहिए अपनी टीम में, अब यंगस्टर नहीं चाहिए, बट हैविंग दैट गाय वुड मीन कि भाई अपना मिडफील्ड अगले 10 सालों के लिए भी सेट है. मुझे पता है वो एक्सपीरियंस नहीं लाएगा, एंड आई नो कि भाई एट टाइम्स यू नीड एक्सपीरियंस मोर देन एनीथिंग, बट come on guys, Gabri Vega would be a fantastic signing for us if we pull that off, but impossible for us. We are not even going for him. जो भी टीम उसको लाने वाली है भाई, they're gonna get a wonderful player. Yep, absolutely. मतलब हम काफी लिंक थे यार नंबर 8 से, बट यार यहाँ लिवरपूल भी पर काफी लिंक थी. हाँ काफी, मतलब सादिक भाई बर्थडे आज, भाई क्या बात है भाई, आई डिडंट नो ब्रो. सादिक भाई ओपी ब्रो, सादिक भाई हैप्पी बर्थडे यार. क्या सादिक बात है भाई यार बाबा. जियो हजारों साल यार भाई. डेफिनेटली पार्टी ड्यू है सादिक भाई का, तो भाई अपने क्विज में भी काफी अच्छा कर रहे हैं यार, तो फॉर मी इज ऑलरेडी द विनर. तो भाई सादिक भाई ओपी यार, एब्सोल्युटली इनसे चैट हो जाए. सादिक भाई बर्थडे है, हैप्पी आई एम बर्थडे अज्यूमिंग. यार या सादिक भाई. हाँ, ऑल ऑफ देम आर लग सेम. तो रहा है. हाँ, काफी लोग कह रहे थे, चलो तो भाई, यार हैप्पी बर्थडे यार सादिक भाई, एंजॉय करें. नाइस नाइस. दुआ चलो गुड स्टफ. दुआ करेंगे आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल 100%. लेकिन हाँ, लियो वाज अ लग्जरी, ऑनेस्टली गुंडोगन इज मोर लाइक अ नेसेसिटी. एग्जैक्टली दैट प्रोफाइल ऑफ अ प्लेयर, वरुण, यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन नॉट जस्ट दैट, कहीं ना कहीं वी ऑल नो दैट राइट बैक एक सिचुएशन है वेयर लॉन्ग टर्म का एक सॉर्टिंग चाहिए. डेफिनेटली बेलेरिन, रोबर्टो, और इवन फॉर दैट मैटर कुंडे और अराओ आर नॉट रियली राइट बैक्स, राइट, पर से. तो वहां पर आई थिंक फ्रेस्नेडा, आई थिंक यू गाइस आर आल्सो इंटरेस्टेड इज व्हाट हाँ. आई हियर. और या वो एक कितना 20 मिलियन में आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 120 I guess. Yeah, that would या be आर्सेनल 20. से तो आई थिंक दैट वाज द कोटेड प्राइस. आई Yeah, थिंक ही yeah. इज वन, और कौन, लेकिन पवार्ड इज नॉट द ऑप्शन. Pavard is not gonna come. Pavard stay कर रहे हैं बान पे. तो पवार्ड Staying इज at Bayern. स्टेइंग. लेकिन भाई अगर बायन में स्टे कर रहा है तो कौन खिलाएं यार बायन, मतलब दे हैव स्टैनिसिच, पवार्ड, दे हैव मजरावी. माजरावी. माजरावी ऑलरेडी चिक पागलपंती चिक हो कर रही रहा है है. यार. मजरावी चिक चिक कर रहा है, वो क्वालिटी प्लेयर. मजरावी को चूतिया हाँ, अपने हमारे पास आना चाहिए था, वहां कहाँ चला गया यार. कम ऑन मैन, वी कुड हैव बिल्कुल. सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ राइट बैक. नहीं नहीं तुम बिल्कुल. यार लेकिन मेरे भाई. भाई, लेकिन वेंकटेश, एक चीज तो अच्छा हो रहा है. आई थिंक विटर ओके, तो मुझे लग रहा है दैट इज क्वाइट डूएबल. विटर आई ओके. थिंक इट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव. कहीं ना कहीं ही इज द कंपटीटर ऑफ एंड्रिक इन द फ्यूचर फॉर ब्राजील नेशनल टीम, यू Yes. कैन आर्ग्यू. Yes. और ही And currently जस्ट he's doing प्लेज. better than Endrick as well. या Currently. करंटली इज एक्चुअली प्रेफर्ड, एग्जैक्टली. Hmm. और अंडर 20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था. प्लस ही, आई थिंक ही प्लेज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड्रे सैंटोस, हु इज आल्सो वेरी गुड, प्लेड फॉर चेल्सी. तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बो हो सकता है इन टर्म्स वीजा ऑफ मिल गया है. ब्राजील फॉर श्योर. आंद्रे संतोष को तो वीजा मिल गया है नहीं, अंकित लेकिन भाई. ये न्यूज आ रही है, पता नहीं वहां पर भी श्योरिटी नहीं है. आधा न्यूज बोल रहा है वो वीजा आया है प्री सीजन के लिए यूएस के लिए, हाँ, नॉट द हाँ, वर्क हाँ. परमिट. Not अभी the तक. work permit. हाँ, तो वही वहां बात पर है. देखना पड़ेगा. मतलब आई होप ही गेट्स इट. थॉट्स ऑन आडा गुल भाई, बढ़िया प्लेयर है. अगेन आई बिलीव इज अ लेफ्ट फुटेड नंबर 10/नंबर 8, आई वुड से दैट्स व्हाट ही लुक्स लाइक. लेकिन वही है, देखो अंडर 20 लेवल पर आई पर्सनली फील जी बाय दैट इट्स अ लॉट काइंड ऑफ, मतलब आप श्योरिटी नहीं रख सकते हो ना अंटिल दे आर रियली टेस्टेड एट दैट लेवल, एट द टॉप लेवल, राइट. तो कहीं ना कहीं यू आर शूटिंग इन द डार्क. बट बारसा और चेल्सी स्पेशली अभी यंग प्लेयर्स के साथ इन्वेस्ट कर रही है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स अ केस अबाउट नॉट बीइंग सो एक्सपेंसिव. एट द सेम टाइम इट्स बेसिकली द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट जावी वांट्स टू प्ले, आई एम अज्यूमिंग. So with that, I think it makes sense by getting such players. But again, would getting say an Arda Güler, I know, be somewhere down the line, Pedri, Gavi, जो positions खेलते हैं, कहीं ना कहीं would you say that that position is not seeing, rather get a striker or a center forward? आर्दा गुलर फॉर बारसा तो मैं नहीं कहूंगा. लाइक नो Hmm. पॉइंट. लाइक बारसा के लिए तो बंदा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी शुड गो फॉर हिम. नॉट बिकॉज ही इज नॉट क्वालिटी प्लेयर. ही इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली. बंदे का मैं पाई चार्ट देख रहा था, मैं पागल हो गया था. हर एक चीज पे उस बंदे के डायमीटर पे टचेस हैं. हर पॉइंटर्स परफेक्ट हैं. Like if you talk about the defensive impacts, those are very good. So I see him as a very good, like complete number 8, because that guy is well adept in passing. Final thirds Hmm. में he is very good. Defensive phases में बंदा काफी अच्छा काम करता है. Yes, definitely. So ये is, I feel he's a very good. He actually is a number 10. ठीक है, but what he does, I feel he does things similar to a number 8. ठीक है, तो he would be very good. But यार बार्सिलोना के लिए नहीं अभी. We need प्रूवन प्लेयर्स. ठीक है, प्रूवन प्लेयर्स. एंड अभी हमारे पास ऑलरेडी वो प्लेयर्स ऑलरेडी यंगस्टर्स हैं अभी. तो मे बी अगर आगे 4-5 सालों में
we could get him if he wants to join in. ओके, फेयर इनफ, एब्सोल्युटली भाई. अगेन मूविंग ऑन, आई नो काफी लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं वापस से यूनाइटेड के एज वेल एज बेसिकली मैन सिटी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लेकिन अगेन मतलब मैन सिटी का हमने बात ही की है. बर्नार्डो सिल्वा वाज टारगेटेड बाय बार्सा इन द लास्ट 2 विंडोज एंड कहीं ना कहीं वो खुद चाहता था. एंड राइट नाउ फॉर व्हाटएवर रीजंस ही इज बीन लिंक्ड विद पीएसजी, हैविंग सम फ्रेंच कनेक्शंस ऑब्वियसली इन द पास्ट. लेकिन मैन सिटी यार, मतलब मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ दैट हाउ कुड दे लेट मारेज गो राइट नाउ. मतलब मारेज, आई नो सऊदी, ही इज 32. मतलब क्या खेला है बंदा लास्ट सीजन यार. ऐसा भी नहीं कि आई नो बेंजेमा भी बहुत अच्छा खेला है बीइंग अ स्ट्राइकर, बट बेंजेमा इज 36. यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड. Kante is injury prone. I can understand why he's going. Why would Mahrez go right now? I know he's having a connection being Algerian. I totally get that in terms of the roots or etc. I totally get that. लेकिन Mahrez, I'm sure Man City अच्छा खासा पैसा दे सकती है भाई उसे. दे रही है, दे सकती है, बट हाँ, लाइक व्हेन यू टॉक लाइक कंपेयर इट विद सऊदी पैसा, तो सऊदी वाला पैसा तो नहीं दे Of सकती मैन course. सिटी. बट यार लाइक प्लेयर्स क्या ज्यादा लाइक व्हाट आर द प्लेयर्स थिंकिंग राइट नाउ? क्या मतलब भूल गए हैं कंपटीशन? आर दे थिंकिंग लाइक चलो हाँ ठीक है, 30 का हो गया हूँ मैं, 32 का हो गया हूँ मैं, डन, जीत लिया ट्रेबल, चलते हैं, पैसे कमाते हैं? क्या एम्बिशन को क्या हो गया है यहाँ पे? आई डोंट नो. And I don't expect Mahrez to leave at this point in time. He's not done. He's not done yet. सिटी छोड़ Exactly. दे, अरे यूरोप जाए, कोई और टीम जाए यार, मिलान मिलान जाए, वहां पे प्रूव करे यार. बट अभी कॉम्पिटिशन खत्म थोड़े हो गया यार. He's just 32 man. प्रॉब्लम वही पैसे हो उसके जाती है साथ ना, खोए जैसे जा आपने रहे हैं. बोला मिलान फॉर एग्जांपल. Mahrez is actually having like sufficient part of the contract left, तो वो he will be quite expensive. At the same time उसके wages आप बोल सकते हो that is also high, and obviously that was one of the reasons why he first league मतलब he went to Man City apart from wanting to win trophies. लेकिन वही अगर बर्नार्डो सिल्वा भी जाते तो I'll be really surprised if they let Mahrez go. It be one or the other. It cannot be both. Simply put, right? एक तो लेकिन लग Exactly. रहा है, एक तो निकल एक तो रहा है लग रहा मतलब वो. जाएगा. तो with Kyle that, Walker also feels like he's gonna go. काइल Kyle वॉकर Walker. यहाँ पर सऊदी के तो आए, बट आई बिलीव बायन के भी आ रहे हैं. पता नहीं, इतने सारे राइट बैक्स तो बायन नहीं Bayern अफोर्ड कर क्या सकती है. आई डोंट भाई. नो, तो वो शेफील्ड तो का आ ऐसे रहा था, पेपर टॉक है. back to his hometown club, और पता नहीं. वो भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. लेकिन नॉट जस्ट दैट, आई थिंक मिडफील्ड में यार दे आर नॉट ओनली गोइंग फॉर कोवाचिच. कैन दे कैन दे बेसिकली हाईजैक डेक्लन राइस? क्या लगता है? आई डोंट नो. चेल्सी की बात कर रहे हैं हम ना, कि सिटी की मैन बात सिटी कर रहे हैं. मैन सिटी मैन ओह सिटी आर भाई, नो, इंटरेस्टेड इन व्हाई? डेक्लन राइस इन द लास्ट नहीं नहीं 24 नहीं आवर्स. यार. बहुत और स्ट्रॉन्ग भाई साहब, लिंक्स आए. ये मुझे लग रहा है कि ये एक पीआर स्टंट है, ताकि वेस्ट हैम और पैसा ले सके आर्सेनल से. इट्स जस्ट दैट. अच्छा, that could सिटी be one सिटी of क्या the करेगी things. इस टाइम का, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? they have Calvin Phillips as well, they have Rodri, now they have got one of the best playmakers of all time, the Zidane Stones. So I don't know what they're gonna do with Declan Rice. I mean, like, yeah, Exactly. he is a quality player. City pay he would be terrific, yeah, but then they don't need him. That's what I'm saying. So you have Rodri, you have Stones. Looks like Kovacic 40 million euros. में yes, people, that is news as well that it's almost there. Official नहीं हुआ है, but things have been agreed between Kovacic and City. वो तो पहले ही हो गया था, लेकिन Chelsea और City के बीच में बातें चल रहे हैं. And 35 million pounds, which is around 40 million euros, which is actually is market value. अब देखो तो Kovacic अभी भी काफी young है, and I think he's a ball carrier and he's very good. Pep can take him to another level, but वही है, अगर वहां पर रॉड्री, स्टोन्स और प्लस डेक्लन राइस बाई चांस अगर ट्रू है तो आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग फॉर श्योर. वो एक इशू है. तो वो लेट्स बी रियल, वो वहां ट्रॉफीज के लिए जा रहा है. प्लस ऑब्वियसली पेप ऑब्वियसली अट्रैक्ट्स प्लेयर्स, वो तो है ही है. But I'm really surprised, यार, for one who loves coaches, he's kind of leaving Chelsea. But why do you think people are leaving Chelsea? Well, there's something wrong behind the scenes. Ab Kai Havertz being agreeing to go to Arsenal, Mason Mount Champions agreeing to League go to football. Manchester United. Champions League मतलब football that पहला. cannot be the only reason, जी भाई. I think आप जाते हो तो I know you want to stay in the same country, you don't want to relocate countries. I understand when you're that age, around 25 years of age. लेकिन all the three आप देखो, Mason Mount to Manchester United, Kai Havertz to Arsenal, Kovacic to Man City. Like ये तीनों ही आप बोल सकते हो. And plus Jorginho जो गया है to Arsenal in the last 6 months. Somewhere down the line I feel that there is something drastically wrong, because ये बहुत ही surprise है. This is not what Chelsea players were meant to do, right? In the past it used to be Exactly. the other I way think around. with the change of ownership, I think players are kind of losing trust with the owners, because they are thinking कि भाई ये like nothing is guaranteed for us, and हमारा playing time guaranteed नहीं है, हमारा quality of football guaranteed नहीं है. Dressing room की situation अभिषेक भाई जो आप कह रहे हो, वो that's not very good, and I think this is like too bad, very bad situation. मतलब पोचेटिनो कैसे हैंडल करेंगे इसको, like
all of these players are already there, but इनमें से आधे players top players हैं यार, ये top players हैं, and they want to leave. मतलब कोवाचेक का ठीक है, चलो कोवाचेक का समझ में इसलिए आता है कि भाई कांटे का समझ में आता है यार, कांटे चल ठीक है, इंजरी प्रोन था एंड ऑल, ही वांटेड टू लीव. जॉर्जिनो Exactly. व्हाई, बिकॉज एंजो आ गए थे. बट काय हेवर्ट्स, कोवाचेक नाउ, मुझे माउंट भी समझ में आता है अंकित भाई. माउंट को लगता है कि ही वाजंट ट्रीटेड फेयरली, उसको सैलरी जो उसकी मिल रही है डजंट रिफ्लेक्ट हिज कंट्रीब्यूशन. बट आई थिंक माउंट इज स्टिल अ टॉप प्लेयर एंड feels like कि भाई ठीक है, he's done with Chelsea, and even being coming through the ranks of Chelsea, he wants to play somewhere else. तो but surprising है, बहुत ज्यादा shocking भी है actually कि एक साथ तीन players teams आ रही हैं and they accept personal terms agree कर ले रहे हैं, मतलब they are not या happy. मतलब भाई, shocking. स्पेशली मतलब मेसन माउंट को तो और भी लगता है ना कहीं जो अब चेल्सी फैन बेस ना बहुत स्प्लिट है जी भाई, एकदम बहुत ज्यादा स्प्लिट है अभी. मतलब Yeah. सम पीपल आर एक्चुअली कॉलिंग मेसन माउंट अ स्नेक. मतलब ये मैं मतलब आई वुड नॉट इवन हैव इमेजिन्ड. लेकिन देयर आर पीपल लाइक मी एंड ऑफ कोर्स यू, मतलब अगेन पीपल वो रीसेंसी बायस रखते हैं. मैं तो काफी लड़ पड़ता हूँ भाई. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, पीपल इन द चैट माइट हैव सीन इट भाई. आई हैव रैंटेड लॉट्स अबाउट मेसन माउंट. मतलब पीपल आर सेइंग कि बंदा भाई 1 साल बाकी है, घटिया सीजन रहा है, बंदा 40 30 40 में आ जाना चाहिए भाई. एक इंग्लैंड इंटरनेशनल है, प्लेड बाय every manager that is played for literally every minute. और एक बंदा है who can play in 3 positions and who's actually got numbers. People are not comparing, लेकिन actually at his age what even Frank Lampard did not get, he's got numbers. And I cannot even say that how important his work rate is, which is so underrated in my opinion. The work rate 30-40 element is a होता है. joke. 30-40 is a joke for Mason Mount. तो मेरे ओपिनियन में ऑनेस्टली अंकित भाई, मेसन माउंट का पैसा जो वैल्यू होगी should be more than Kai Havertz, मेरे oh ओपिनियन में. yes, I agree as well 100%. मतलब मैं तो बोलता हूँ क्योंकि आप फर्स्टली यू डू नॉट गिव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है. लेकिन अगर आप दे ही रहे हो, अगर वो अग्री कर रहा है व्हाटएवर मे बी द रीजन, आई थिंक देयर हैज टू बी अ टैक्स ऑन दैट. प्लस उसका मार्केट वैल्यू है 60 मिलियन यूरोस, 65 मिलियन यूरोस मेसन माउंट का. तो आई थिंक it will be plus on that. So I think we are talking around 60 million pounds, which is around 70 million euros, little less than what Chelsea is actually asking, and Havertz would be Yeah. 10 million less than that. Yeah, probably. Yeah, बिल्कुल. लेकिन भाई all of this because clown बोली यही है. Actually to be honest we have bought so many players, right, that finally we have to get rid of players, like मतलब in a nutshell वही है main reason, और कुछ नहीं है. Mount should stay Chelsea बिल्कुल भाई, लेकिन वो realistic Yeah. नहीं लग रहा for whatever reason. नहीं लग But रहा. Pochettino Havertz should a good. convince him. लेकिन आर्सेनल पे यार टैक्टिकली फिट क्या लगता है? मतलब वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग हैवर्ट्स इज बिकॉज हाउ वुड ही फिट? मतलब द गाय वुड बी डेफिनेटली बेस्ट. उसका क्या है? राइट साइडेड नंबर 8 इज द बेस्ट पोजीशन फॉर हैवर्ट्स इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है. और Yeah, नंबर 10, yeah, दीज आर द टू पोजीशंस yeah. जो आप एक्चुअली जो खेला हार्डली है चेल्सी में, पीपल फॉरगेट दैट. सो दैट पोजीशन ओडेगार्ड प्लेज, तो कहां शुरू करेगा? Left-sided interior role. क्योंकि लेफ्ट Arsenal साइडेड play in खेलेगा. that अच्छा. three box three Arsenal करती है. उनका जो बॉक्स बनता है वो उनके लेफ्ट बैक का इन्वर्जन से बनता है. Zinchenko steps in the box, Partey is already there, और इस पॉइंट टाइम पे जॉर्जिनियो होते थे. एंड और फ्रंट डेक्लन टू राइस में यू आएगा तो हैड दे विल गो डिफेंसिव डेक्लन राइस एंड देन लेट या हैवर्ट्स इन. या डेक्लन राइस आ जाएगा, तो डेक्लन राइस वुड स्टार्ट डीपर, एंड देन ऊपर से जो हैवर्ट्स होगा, जो जाका की पोजीशनिंग होती थी. जाका यूज्ड टू प्ले दैट एक स्ट्रॉन्ग कैरिलेरो रोल, जो ही यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम अ पिवट, ही यूज्ड टू प्ले एज एन इंटीरियर. ठीक है, जैसे हम अभी देखते हैं स्टोन्स को फ्रॉम डिफेंस टू मिड वो पुश करता है, जो जाका यूज्ड टू पुश फ्रॉम मिडफील्ड टू अटैक. सो वो एक लेवल ऊपर खेलते थे, एंड वो इंटीरियर के रोल में खेलते थे, मेक दोज रन्स इन द फाइनल थर्ड, एंड दैट्स व्हाट काय हेवर्ट्स वुड प्ले. ही इज द जाका रिप्लेसमेंट. बट व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज, क्योंकि जाका ट्रांजिशंस पे डिफेंसिवली काफी हेल्प करते थे टीम को. He used to track back. He used to play as a left back as well. So maybe they are wanting to sign Declan Rice so that they could cover and mark the flanks. They can defend from the flanks and they can have a number 8. तो वो जो Xhaka के रोल है उसको split करें दो roles में, and they are actually doing better इस point time because Xhaka had a lot to do. तो ये हाँ exactly अमनदीप भाई, 3-2-2-3 या 3-box-3 आप कहते हो इसको. तो उसमें the left sided central midfielder role could be Zinchenko, Declan Rice, and up top आप वहाँ पे Kai Havertz and Odegaard को 2 number 10s या 2 number 8s को खिला सकते हो, जैसे अभी वो खेल रही है सिटी. और basically they Arteta might be doing his guru's formation by 3-2-4-1. That might be a possibility as well. You never know. But again, मैं काफी surprised होऊंगा because remember even Emil Smith Rowe has hardly got any football last season. और Exactly. ये एक That बंदा is what I'm काफी worried about. potential
रखता है. तो I am again very surprised that people like Kovacic or Havertz are ready to leave Chelsea despite having arguably more competition in the clubs they are going, although वहां पर चैंपियंस लीग है, मतलब वहां पर Yeah. थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क है, but it is what it is. Absolutely भाई. Z भाई, I shall leave in a couple of minutes. By the way, we have started a few questions and we come to it. I think मैनचेस्टर यूनाइटेड के काफी लोग पूछ रहे हैं, and हमने मैक्सिमम माउंट को बात की है भाई. किम मिन जाए looks like in Z भाई, I think Bayern is what he's preferring. Yeah. मैं तो ये भी सरप्राइज हूं कि why isn't Declan Rice preferring Bayern, but that's another conversation. जी भाई, generally for Manchester United right now, what do they need for them to kind of be assured कि यार it's a good transfer window for you? एग्जैक्टली इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो भी बनाया था. कवर्ड कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं. सबसे पहले गोलकीपर, सबसे पहले आंख बंद करके एक गोलकीपर. Exactly. दे कांट एंड शुडंट मसंट गो विद डेविड डे नेक्स्ट सीजन. दूसरी बात, दे नीड अ डिफेंडर. अब इट कुड बी अ बैकअप डिफेंडर और इट कुड बी अ स्टार्टर. आई डोंट केयर. इट हैज टू बी अ डिफेंडर बिकॉज दे कांट गो इन द सीजन अगेन विद वरान एंड लिसांड्रो एंड लिंडलॉफ, जो कि काइंड ओके ठीक है डिसेंट है, मोर देन डिसेंट, फाइन, ओके. So Maggu ka replacement or else another player who can fight for the spot. So इस point time पे they are missing out on Kim Min Jae. They have to find a defender. Midfielders बहुत important है. मे बी अगर वो डिफेंस नहीं भी साइन करते हैं तो होपिंग कि लिचा एंड वरान स्टे फिट द एंटायरिटी ऑफ द सीजन, दे कैन सी थ्रू इट. लुक शॉ खेल लेते कभी कभार पोजीशन पे. मिडफील्डर्स, अ नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट एनी नंबर 6, अ प्लेयर ऑफ द लेवल ऑफ कोकचू. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई कोकचू कुड हैव बीन टेरिफिक एंड मिकेल मेरिनो कुड हैव बीन वेरी गुड. मेरी तो हमेशा से पिक मिकेल मेरिनो रहती है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग अलोंगसाइड कैसेमिरो. एक डिसरप्टिव डीएम के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डीएम जो कि गेम रन टेम्पो रन कर सकता है गेम का इस पॉइंट टाइम पे. जस्ट दैट एंड अ स्ट्राइकर. तो काफी सारे मैंने नाम ले लिए यहाँ पे. हर एक पोजीशन में आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है. बट comes down to the ownership basically. comes down to ownership and ये करना पड़ेगा भाई. नो ब्रेनर. आप चैंपियंस लीग में खेलो, इफ यू डोंट साइन अ गोलकीपर, इफ यू डोंट साइन अ मिडफील्डर, इफ यू डोंट साइन अ स्ट्राइकर, यू आर डन. नहीं कर सकते आप कॉम्पीट टॉप लेवल पे. बिल्कुल भाई बिग अप टू जी भाई एंड एवरीवन इन द चैट. मैं काफी क्वेश्चंस आए तो मैं लूंगा, आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, तो बने रहना सब लोग. जी भाई चलिए, बट भाई देख रहा हूं मैं यहाँ पर, गाइस कम ऑन, ऑलमोस्ट 400 पीपल वाचिंग. देयर शुड बी 400 लाइक्स ऑन द स्ट्रीम टू बी वेरी ऑनेस्ट. और सब लोग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स एंड जी भाई's two channels, भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार? कम ऑन, लेट्स गो देयर. There's a lot of content. We try and cover entire football as much as is humanly possible. And again, thanks to Z bhai, always inspires us as well. So, bhai, आप देख सकते हो. And yes, people, again, remember there is going to be a meetup soon. I've been telling it this summer, and that's there. हम Z bhai से भी plan करेंगे. We'll try and meet up. Let's see, Bangalore people में तो यार anyone there मुझे DM करिए. मेरे I think address is in the description on Instagram and Twitter, so we'll definitely meet up. And Z bhai, big up यार. Z bhai, final comment before going while I continue with the chat. लेकिन क्या लग रहा है यार, मतलब this is going to be one of the transfer windows that you're expecting? Absolutely, इतने सारे sagas already हो चुके with the transfer window just starting, or you're saying it's going to be one of those quieter transfer windows, realistically speaking? क्वार्टर तो नहीं होगा. टीम्स लगी हैं, फाइट कर रही हैं. टॉप स्ट्राइकर्स विल मूव, टॉप मिडफील्डर्स ऑलरेडी हैव मूव्ड. मुझे लगता है काफी ड्रामा ऑलरेडी इस विंडो में बचा हुआ है. काफी ड्रामा बचा हुआ होने को है. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन what Liverpool will sign, what Newcastle will sign, what Barca will sign. So I think काफी कुछ बचा होने में. So देखते हैं, we'll see यार. So बहुत शुक्रिया अंकित भाई for having me. अरे always यार, always. Pleasure. कोई नहीं. See you soon, जी भाई. Again, guys, I'm continuing with the stream, तो बने रहना भाई. Big up to जी भाई. जी भाई OP हो जाए यार सब लोग. Let's check out his channel in case you're not watching. enjoy guys. Thank you so much अंकित भाई. मैं soon very excited to meet you there in Bangalore and hopefully भाई लोगों से भी कैच अप कर लेंगे. So चलो, take care guys. For sure 100% bro. Come on. भाई सब लोग इन द चैट क्या बोल रहे हो आप लोग? बाकी देखिए, यहाँ पर मेलन बोल रहे थे जॉनसन डेविड कैन बी अ बिग मूव. आई थिंक we are talking about Manchester United. मुझे personally लगता है, I don't know what you guys think. I feel that Eric Ten Hag ball में Jonathan David will be a good fit. I genuinely believe that the guy link up play काफी अच्छा है. His movement is quite good. जो Sebastian Haller ने किया था in Ajax, I think that is something that maybe he can get out of Jonathan David and more in fact. तो वो अच्छा रहेगा. But again, knowing Manchester United, by Manchester United, Chelsea, to some extent Real Madrid, इनका एक ही problem है. In terms of central striker ना, they always go for a big name, or that is something which may not work all the time. और इसलिए मुझे लगता है Jonathan David might be actually a good signing. But again, Wout Weghorst, people saying that he might want to be a good solution in certain clubs, but मुझे नहीं लगता that Wout Weghorst is that level, as much as I like him, being a Dutch fan as well. Man United should go for Pau Torres. Venkatesh, last season Pau Torres बहुत ही in demand था.
एब्सोल्युटली आफ्टर लास्ट सीजन, पिछले साल का विलारियल के लिए जो किया था इन द चैंपियंस लीग, वी ऑल रिमेंबर दैट. मुझे खुद, बाय द वे, फॉर पीपल वाचिंग, आई एम ग्लैड टू just share with you that I remember Sony had invited me, and Sony team में जब पूछा था for Chelsea, I had said one signing that you want. This was exactly last summer. मैं actually Sony team पर था और वहां पर जॉन डाइस ने मुझे पूछा था one signing that you need in Chelsea. I said Pau Torres has to be that guy. But again, I would say that कहीं ना कहीं उसका सीजन इतना बढ़िया नहीं रहा है. United, I think Disasi is someone that Kim Min-jae going to buy in. I think Disasi makes total sense. I think he's a tall guy who could definitely do a lot with the ball. He's a backup anyway. Shifting leagues, it'll be a good thing for him क्योंकि यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज ऑलरेडी है. और बाय द वे, यस, ग्वार्डियोला सिटी में देख रहा हूँ यार, काफी लोग बोल रहे थे इसके बारे में. हमने बात किया है ऑलमोस्ट एवरी क्लब के बारे में, एंड विल कम टू लिटिल बिट रिमेनिंग जो हमने नहीं बात किया एवरीवन, एंड दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग द स्ट्रीम, रिस्पेक्टिंग यू ऑल. लेकिन भाई सब लोग, ऑलमाइटी फैम, मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे, तो माय मॉड्स, लेट्स हेल्प अस आउट. एवरीवन इन द स्ट्रीम, भाई करीबन 300 लोग देख रहे, 300 लाइक्स तो बनते हैं. हैव वी गॉट टू 300 लाइक्स? And make sure that all the 300 people not only like, but most importantly, आपको अगर मिस नहीं करना है, lot of transfer updates, lot of quizzes which is coming back as well, a lot of other content जो हम करते हैं international football as well as A to Z kind of league football हम cover करते हैं, as well as on the other channel by Almighty Sports. सब लोग bell notification button दबाइए. The bell notification icon for all the notifications is extremely important, my guys. And yes, I'm coming with a lot of shorter videos and shorts as well. Don't forget to check out them and give us feedback. Gehi should not go to Tottenham is what Siddhant is saying. Okay. भाई ग्वार्डियोल की बात कर लेते हैं. Everyone, ये बात मैं जी भाई से बात नहीं कर पाया when he was here, but ग्वार्डियोल टू सिटी, मतलब देखिए, सस्ते में तो नहीं आने वाला ग्वार्डियोल. आई रिमेंबर लास्ट सीजन 90 मिलियन इज व्हाट दे हैड रिजेक्टेड द ऑफर. 90 मिलियन ऑलमोस्ट वो टेम्प्ट हो गया था बंदा. देन वी वेंट फॉर अ बार्डियाशेल. वी ऑल रिमेंबर दैट, सबको याद है. I think Guardiola is a brilliant player. अभी भी there are some mistakes, but considering his physique, considering his movement, considering his versatility, or a reader, a ball carrier, by header, Guardiola is almost the ultimate package for a potential or almost ready for the Premier League right now. अगर आता है तो it's a no-brainer. But अगर आता है 90 million, what they had rejected last time doesn't make sense. I know City have won the Champions League. A lot of reasons why City might be able to invest. लेकिन they have a Nathan Ake. भाई कहीं ना कहीं नेथन आकी के साथ बहुत ही काइंड ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट होगी मेरे ख्याल से, बिकॉज आई नो लपोर्ट इज प्रॉब्ली गोना लीव. आप लोग ये बोले लपोर्ट को कहां जाना चाहिए, डेफिनेटली लेट मी नो, बिकॉज आई वाज थिंकिंग लपोर्ट माइट गो बैक टू फ्रांस विद पीएसजी, बट नो, वहां पर लूकास हर्नांडेज लुक्स लाइक वेरी लाइकली फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, और वहां पर इसलिए डोमिनो हो रहा है. किम मिन-जाए गोइंग टू बायर्न म्यूनिख, लूकास हर्नांडेज गोइंग टू पीएसजी, और नापोली में एक ओपनिंग हो सकती है. तो भाई विल लपोर्ट गो टू सेरी, आई डोंट नो. लेकिन ग्वार्डियोल टू सिटी क्वाइट लुक्स लाइकली, कोवाचिच टू सिटी लुक्स लाइकली, राइस टू सिटी डज नॉट लुक लाइकली. मुझे लगता है आर्सेनल जाएगा अभी भी, एंड यहाँ पर मारेज छोड़ने वाले सिटी, तो हु विल बी रिप्लेसिंग मारेज ऑन द विंग, डू लेट मी नो एवरीवन. लेकिन हाँ, आई थिंक नेथन आकी कहीं ना कहीं बहुत अनलकी होगा, हो जाता है. और मैं वापस से बोलता हूँ, पीपल हेटेड मी, गेव मी अ लॉट ऑफ इट लास्ट सीजन, जब मैंने बोला था चेल्सी टू बाय बैक नेथन आकी. नहीं, व्हाट अ सीजन ब्रो ही हैड, व्हाट अ सीजन. Should sign a left winger to play along with Garnacho, turn Rashford to striker along with Greenwood for a new signing, Sancho to the right wing with Anthony. Okay, Phantom is saying that. I respectfully think otherwise, Phantom. मुझे लगता है, I would say Rashford should be a left forward, period. Garnacho is a super sub, period. That is what it is. Do not touch the left wing in my opinion. Right wing में you have an Amad Diallo. हम बोल रहे हैं Amad Diallo can play there. That is what I would do. क्योंकि याद रखिए, Sunderland are not in the Premier League. उनको नहीं मिला है promotion. तो वहां पर because of that Amad Diallo might be an option along with Greenwood as backups to and Anthony as well as Sancho. तो totally आपके पास 6 जन है जो wing में खेल सकते हैं. Phantom, you have 6 people if you're Manchester United who can play on the wings on paper. और एलांगा को तो बात भी नहीं किया मैंने. Think about it. So I don't think you need that. You need a center forward. You cannot depend on Anthony Martial anymore. आपको चाहिए एक center forward. इसलिए हम बात कर रहे थे maybe about Mbappe in the best case scenario, who wants to play center forward in the long run, और वो थोड़ा बहुत swap भी कर सकता है in game with Rashford. लेकिन that we know that is a second choice for Mbappe. अगर वो PSG छोड़ता है, first choice has to be Real Madrid. लेकिन who else? I think Højlund maybe for around 50-60 million, yes, not for 80 million जो मांग रहे हैं Atalanta. और कोलोमोनी 100 मिलियन होगा, तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है. ऑजीमैन
रूडी गार्सिया will not let him go in my personal opinion. ठीक है, as well as Napoli के पता ही है कैसे करते business. Vlahovic might be a realistic one. Vlahovic between Chelsea and Manchester United might be a proper fight towards the end of the window में मुझे लगता है. Turam to Liverpool, हाँ, that's actually a good signing for sure. लेकिन is he a starter? Not sure. भाई उसके build के लिए his movement is quite good. And we are talking about the midfielder Turam, not the striker Turam. Striker Turam तो मुझे लगता है PSG जाएगा on a free. But I think Turam to Liverpool makes sense because I think Liverpool कहीं ना कहीं in the long run they have to replace a Fabinho. ठीक है, Fabinho I know is a pure DM. Turam can do a little bit more, but I think he's more in the mold of a Nemanja Matic. जब young Nemanja Matic आए थे, I think to Chelsea and then he went to Benfica. The early years he could play a lot with the ball as well as someone who was tall enough. So I think वो वाला एक profile रहेगा Turam का, which I think might work well considering जो defensive midfield has been an issue. And in terms of connect भी यार जो आपका केटा नहीं कर पाया, somewhere down the line he could do a bit of both. I have a gut feeling that Newcastle is going to challenge for Premier League title. Wow, Predator Gaming, that's a bold prediction for sure. Guardiola will bring much more compactness, yeah, but I still believe that Nathan Ake बहुत underrated है. I don't know why people do not rate Nathan Ake as much, but he has been sensational. मतलब हम यहाँ पर पता नहीं क्यों यार डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं. भाई everyone in the chat, tell me. यहाँ पर हम बोलते हैं Kamavinga is one of the most improved players and he is. Don't get me wrong. Kamavinga I know is a CDM who could play left back. There's a different profile altogether. ठीक है, but Kamavinga can play number 8 as well. Remember that. He's a left-footed player. भाई बहुत improve किया absolutely. लेकिन Nathan Ake who's mainly a centre back who could play left back as well as left central defensive midfielder at times. भाई why do we not rate him? बंदा treble जीता at a canter bro and he's been heart of that. I think कहीं ना कहीं बहुत ही underrated है Nathan Ake. Even today, even after the season he's had, in my personal opinion, physical strength definitely लाएगा Prajwal, but will he sit on the bench is a big question after signing for that amount. I don't know about that. Again, Pep can do that. We all know that. No problem, Samar. No problem at all. भाई थोड़ा सा चेल्सी पर आ जाते हैं. There's a problem with Chelsea with giving salary for Mount. They think he's into top player and doesn't deserve high salary, but while asking for transfer fee, they won't feel like for a top player. नहीं, that's a good point. Very good point, Santosh. I don't disagree with this at all. Mount का जो salary offered है, there has been multiple reports, mixed reports है, लेकिन वर्बली एक चीज बोला था और वो फॉर्मूला ऑफर नहीं पहुंचा माउंट के पास, इसलिए देयर वाजंट अ साइनिंग आफ्टर द डिस्कशन इन फरवरी, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंड. और वहां पर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट ये बोलना चाहूंगा दैट बिटवीन फरवरी एंड मे माउंट हैड, आई नो ही वाज इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी सर्जरी भी हुई थी माइनर, लेकिन he had sufficient amount of games to say that अभी भी he loves Chelsea to the core and he wants to do more. So कहीं ना कहीं सा गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए. दैट्स अ फैक्ट. वो फुटबॉल का है, वो स्पोर्ट का है डेफिनेशन, तो वो करना चाहिए था माउंट को. तो आई थिंक देयर आर क्वेश्चंस ऑन बोथ द पार्टीज. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा माउंट दूध का धुला है, लेकिन साथ में चेल्सी और डायरेक्टर्स अपने भी नहीं है. They need to treat Mount differently. I 100% agree. They cannot treat Mount like he's a just another 24-year-old, like हमने जो 30,000 players sign किए and we can just let Mount go for peanuts. We cannot do that at the same time. So I think there has to be a stopgap solution. वो again मैं काफी surprised हूँ with all these midfielders leaving Chelsea or wanting to leave or wanting to be open to leave. Why? क्योंकि Pochettino अभी तक पहुंचे नहीं है physically in Chelsea. आने तो दी यार, आने तो दो, बात तो करो उससे. क्या करना चाहते हैं Pochettino? I'm very surprised, bro. Very surprised. Ancelotti was promised top signings with the board, and now he's seeing that everything depends on Mbappe. The Italian is very upset. No, I don't believe in this news, Amandeep. I don't believe. I think Bellingham को 100 million में sign किया है, तो come on guys, that's a huge signing for Real Madrid. Real Madrid fans in the house, make some noise. भाई Bellingham को sign किया है, and I know कहीं ना कहीं Bellingham अभी भी work in progress है, but बंदा इतना young है. I would say Bellingham is better at his age compared to what Kamavinga was at his age. I'm just telling what Kamavinga is at his age. I would say Bellingham kind of with Kamavinga can be the next big thing, bro, in the Real Madrid midfield. Just think about it. That is next level. Kamavinga, Bellingham, Valverde, Chouamani, bro, that is some midfield for sure. मतलब यहाँ पर questions नहीं कर सकते भाई Real Madrid or Ancelotti in my opinion. हाँ, they can question about maybe the striker situation, लेकिन अगर सच बोले तो even Ancelotti और Real Madrid को भी shock लगा. They were all expecting Benzema to extend. Transfers do not happen in a week, especially when you are a club like Real Madrid. You need to plan it in advance. Or plus, we all know Real Madrid, Chelsea, Manchester United, to some extent Barca in the past, by Bayern Munich. ये सब clubs है ना जहां पर थोड़ा सा pull definitely रहा in the last decade and a half, if not more. लेकिन
every club knows that these clubs have a little bit more money compared to other clubs. तो वो थोड़ा सा difficult होता है in the transfer market, realistically speaking. So I know it's not FIFA, but sometimes you have to balance it out. मोहम्मद शाहनवाज बोल रहे पुलिसिक टू सिटी कर दो भैया, अच्छा पैसा भी मिलेगा. वेल, to be honest, they need a winger, but they need a right winger. Pulisic again, Chelsea ने hardly खिलाया on the right, on the left wing. His best position is left wing in my opinion. गौरव इन द हाउस भाई, गौरव कटारा, बिग अप यार. एनकुंकू ब्रोया बैकअप स्ट्राइकर लेके आ जाओ लाइक मेडी टरेमी. भाई यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है भाई. आई नो आई एम स्टिकिंग टू चेल्सी फॉर द टाइमिंग एंड विल कम बैक टू अदर क्लब्स. भाई सब लोग, breaking news that Chelsea may be open for getting in Caicedo in swap of Gallagher plus Broya. Really breaks my heart. Really breaks my heart. Not for Gallagher, apna kachra as much. लेकिन भाई, I know he's a Cobham boy. I would definitely want him to be part of the squad. क्योंकि हमें चाहिए कुछ Cobham homegrown club trained players for sure in the future. और वो Gallagher definitely लाता है. Plus he's a decent squad player at best. ठीक है. लेकिन ब्रोया हमारे पास स्ट्राइकर है ही नहीं. मैं यहाँ पर जी भाई से पूछना भूल गया. एवरीवन इन द हाउस भाई, डू लेट मी नो आपके स्काउटिंग रिपोर्ट फॉर निकोलस जैक्सन. वी आर गोइंग फॉर निकोलस जैक्सन. आई बिलीव उसका रिलीज क्लॉज अराउंड 30 odd million pounds और 30 million euros इफ आई एम नॉट रॉन्ग. काफी अच्छा प्लेयर लग रहा है एट हिज एज, कंसिडरिंग खाली 1.5 सीजन काइंड ऑफ रहा है इन विलारियल, बट इन द सीनियर टीम दैट इज. Is he better than Broya? Probably, arguably yes, arguably not as well. तो मैं बोल रहा हूँ, why don't we give Broya a chance? क्योंकि ACL के बाद में आया. Why do you let go Broya? Broya has got at least a sense of EPL football. उसने अच्छा किया था on loan. तो why aren't we giving Broya a chance? I would like to question this. Nkunku can be a backup striker along with maybe a Sterling. लेकिन these are not strikers. So these are second strikers playing in behind Broya. To play Broya or David Atal Fofana, why get another youngster who has potential? Again, shooting in the dark with Jackson. As much as वो अच्छा लगता है. Again, Jackson के इतने shots नहीं आते. I don't know what I have seen little of him. He is good. Link up play अच्छा है उसका. Hold up play अच्छा है. For his height, it's not easy, but he is definitely good. And he scores decent goals, decent amount of goals. उसका अच्छा है. Around 2.5 games में वो गोल मारता है on average, which is not great, but not too bad at his age, definitely. और of course, being an African, एक pace natural आती है for sure. But at the same time, he's not someone whose shots is like boom. वैसे shots नहीं मारता. As well as he's not good enough or for his height for हेडर्स, और वो हमें चाहिए. गैब्री वेगा यार भाई, काफी लिंक हुआ है गैब्री वेगा टू द प्रीमियर लीग क्लब, न्यूकासल, चेल्सी, लिवरपूल. एट द सेम टाइम आई थिंक बार्सा फैंस वुड आल्सो वांट हिम. आई जेन्युइनली बिलीव दैट अगर यहाँ पर हैवर्ड जा रहा है, माउंट जा रहा है भाई, अगर गैलेगर भी जा रहा है, कोवाचिच भी जा रहा है, तो वी नीड समवन लाइक अ गैब्री वेगा फॉर श्योर. अब सोबोस्लाई, आई नो द रेड बुल ग्रुप डायरेक्टर्स जो है हमारे, दे लाइक सोबोस्लाई, बट बहुत एक्सपेंसिव आने वाला है. गैब्री वेगा इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा. And I know he wants Champions League football, लेकिन again first full major season हुआ है उसका, I think वहां पर, तो I think it's good enough. I know he's kept them in the Celta Vigo in the La Liga, लेकिन for me he can do a Premier League switch or then move to a Champions League club. So I think मुझे कहीं ना कहीं मैं biased हूँ, मैं बोल रहा हूँ that लिवरपूल में he may not start many games, चेल्सी में he will actually start games अगर हावर्ड्स और माउंट दोनों ही जा रहे, along with Kovacic and of course Ruben Loftus-Cheek भी भूल गया. पेलेस्ट्री भी है, yes. मैनचेस्टर यूनाइटेड देखिए, that's why I'm saying do not go for a winger. Mariano, not sure about that bro. Aki is a very good underrated player, yes absolutely भाई. Again मैं देख रहा हूँ काफी कमेंट्स आ रहे हैं. चलो यहाँ पर अमनदीप का टैक्टिकल रिपोर्ट आ गया ऑन कैफरन तुराम भाई, अच्छा टैक्टिकल रिपोर्ट है. बिग अप टू अमनदीप यार, ऑलवेज हेल्पिंग द चैट एज वेल भाई. चैट ओप यार, सबसे पहले चैट ओप ही हो जाए. बिग अप टू एवरीवन भाई, 200 लोग देख रहे हैं और हमने 1 घंटा से ज्यादा बात किया. वी हैव लिटरली कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी ट्रांसफर रूमर. अभी कुछ नहीं कवर किया तो वील कवर इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एज वेल, लेकिन एवरी क्लब ऑलमोस्ट. And yes, we started off with the Mbappe saga, a little bit of Chelsea, Manchester United ownership saga as well. और क्या domino effect हो सकता है? We spoke about Barca, of course Real Madrid, PSG, and of course we spoke about a lot of other clubs like Arsenal and Bayern Munich as well. Devesh बोल रहे हैं, looks like Dea is leaving. It's sad, but we have to move on. Will always remain a legend. Exactly. For me, people like David Dea, people like N'Golo Kante, recency bias होता है. People forget that these were मतलब almost clubs, these clubs Chelsea, Manchester United respectively were depending on them like crazy. मतलब people forget that the Super League is on the verge of crumbling like a house of cards. Yup Amandeep, absolutely.
लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू वर्क आउट अ सिचुएशन अगेन वेरी सरप्राइज दैट बिफोर अ न्यू मैनेजर कम्स इन वी आर मेकिंग द चेंजेस बिग अप टू मुसेब भाई यार big up to Musib bhai again I might not have given shout outs to a lot of people in the chat because we were in conversation but मैंने try किया highlight करने का as much as possible on the screen as well as start a few comments which I'm yet to take as well some of them मैंने लिया है some लेने वाले लेकिन भाई सब लोग again do not forget to hit that like button come on let's get to over 300 likes my fam my mod do help me out as well and yes people do go and check out our membership on both the channels we have as well as a lot of other activities as well so definitely यहाँ पर और हाँ मेरा promise I remember absolutely prediction league winner is going to be announced hopefully this weekend this Laporta used Messi as a bait for Tebas so that he can give FFP advantage also they withdraw their case against La Liga for CVC now they might go out of Super League sounds fishy yes मुझे भाई definitely fishy है लेकिन I don't think that Messi का एक situation था which is like what he would go with to do that I know कहीं ना कहीं help हुआ है for to Barca but again याद रखिए at what point did Messi not agree to sign for Barca the point was he was not ready to wait for another 1 month or 2 months for them to make sure which players are there which players are not और वो साथ साथ में चाहता नहीं था that the players who are there just leave Barca or reduce their wages because of Messi himself ठीक है तो I think इतना जब desperate situation में बातें हो जाती है तब I don't think it's a situation of playing around that advantage I think it's about them wanting Messi but now that he's not signed you have got an advantage out of that because of the the salary cap that's what I would say but again वो debatable है मुझसे भाई क्योंकि अभी भी Barca on paper remember that is why Messi did not sign क्योंकि अभी तक clear नहीं हुआ था that which all players are reducing their wages I don't think it's a final thing अभी भी I think couple of players को आपको reduce करना पड़ेगा and then things might change that's what I would happen right big up to TCSB bro big up to TCSB as well people 30 million isn't a lot in on today's market. He looks like a blend of Tammy and Isaac. He's like the middle ground of them. If Poch really thinks he's the guy, then I guess. यहाँ पर बात हो रही जैक्सन की अमनदीप बोल रहे भाई absolutely लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ the things which Jackson brings I think Broya brings plus he brings premiership experience plus he's been at Chelsea for a good while I think कहीं ना कहीं unfair हो रहे हम on Broya unless Broya wants to go to Brighton in that deal I don't know we need Broya Poch can work with him exactly I agree with that okay I'm not moved scored in game week 1 didn't score for another 12 games scored then 1 goal scored in another 15 then scored 10 in 11 games impressive but suggests it was just a good month that is again about Jackson exactly so he's not a starter that's all I'm saying as a Barca fan I would rather get Arda Güler as a backup in midfield he's available for only 20 million देखिए Arda Güler is not a number 6 Ali Gaming big up to Ali Gaming यार काफी दिन हो गए nice to see you as always bro लेकिन हाँ Arda Güler for me is more like a number 10 who can play a number 8 ठीक है Gabri Vega is the number 8 who can play the number 10 these are not number 6 I think Barca को चाहिए number 6 who could play as a number 8 that is what is ideal and that is where they were going for a profile of say for example a Gundogan that is what would have been ideal Lo Celso की बात हो रही है अब देखते हैं अगेन जो चीज आर्सेनल करना चाह रही है विद काई हावर्ट्स मे बी बार्सा वांट टू डू दैट विद Lo Celso कहीं ना कहीं लेफ्ट फुटेड नंबर 8/नंबर 6 हो सकते हैं everyone like the stream yes absolutely do subscribe if you haven't and hit that bell notification icon the most important thing of all भाई जो भी देख रहे हैं हमारे 2 चैनल्स है दूसरे चैनल पर यस कपल ऑफ डेज से नहीं आया बट वी डू रेगुलर स्ट्रीम्स वहां पर रेगुलर वीडियोस वहां पर भी Barella to Newcastle, I don't think it's happening. First of all, Fabrizio has cleared it, the sports genius, big up. Lekin, I think he has already cleared it that it is not going to happen for 50 million. Definitely. अच्छा यहाँ पर भाई सब लोग 2 दिन से सुन रहा था Brozovic. Now the stance of Inter is, और by the way, Inter fans, anyone Italian football fans in the house, Fratesi जो रात को खेला भी था कल अच्छा खेला था इनफैक्ट और अच्छा सीजन रहा है Davide Fratesi of Sassuolo भाई वो एक है नंबर 8 who can play as a number 6/number 10 and he is something that Inter के 5-man midfield में would fit well. Things are saying that यहाँ पर Gagliardini जो backup central midfielder थे for Inter Milan will be completing his contract and AC Milan are interested in him. Again like a Çalhanoğlu उल्टा है story यहाँ पर लेकिन is he not a starter in AC Milan? Probably not. Gagliardini as a backup at AC Milan I would take being an AC Milan fan as well. लेकिन on the other hand they are open to letting Brozovic go क्योंकि फ्रटेसी कैन प्ले अ डुअल रोल जो मिकिटारियन भी कर सकता है जो चालोनोग्लू भी कर सकता है तो वहां पर इफ यू हैव अ बरेला इफ यू हैव अ फ्रटेसी इफ यू हैव अ मिकिटारियन यू हैव अ चालोनोग्लू 4 बंदे हैं भाई 4 बंदे हैं फॉर 3 पोजीशंस आई थिंक दैट्स गुड इनफ एंड ऑफ कोर्स यंग असलानी है उनका सेंट्रल मिडफील्डर आई थिंक
For Inter Milan, with the budget they have, I think 5 midfielders should be enough for a starting team and maybe a youngster. I know Casadei has come to Chelsea now, but that's how it is. So I think that's good enough, bro. So I would say Brozovic is more sellable compared to Barella. Barella भाई अभी भी यार काफी अच्छा खेलता है, काफी अच्छा. Brozovic भी काफी अच्छा खेलता है, but वो ये age catch up sometimes. और मैं यहाँ पर I don't know people agree or not. Why isn't से यहाँ पर मैं भूल गया पूछना जी भाई से एज वेल एज आप लोग बोले पालिनिया टू बार्सिलोना इज ऑल्सो एन ऑप्शन. यहाँ पर न्यूज आ रही है लेकिन पालिनिया सस्ते में नहीं आएगा, इसलिए बार्सिलोना वाज गोइंग फॉर आम्रबात और गुंडोगन, ऑल्दो दे आर टू डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स. लेकिन पालिनिया बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है कंपेयर टू रूबन नेवेस. तो पालिनिया के लिए क्यों नहीं जा रहे चेल्सी ब्रो? वैसे सिमिलरली व्हाई आरंट वी गोइंग फॉर अ ब्रोजोविच? Yes, I know he wants Champions League football ideally, but come on, Brozovic can help us यार. एक क्रोएशियन जा रहा है इन कोवाचिच, गेट ब्रोजोविच. मैं तो बोलता हूँ एक डीएम है, very good player, ball player as well, underrated मेरे लिए, and he could be your answer man, along with Caicedo and Enzo. Just saying, I know बहुत डिफेंसिव लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूज ये भी बोल रही है एंजो फर्नांडेज wants to play little bit further up. वो खेलना चाहता है एज अ प्रॉपर नंबर 8 जो बेनफिका में शुरुआत में खेलता था एज वेल एज रिवर प्लेट में. How are you and also how's your family? All good, Richard, all good. We see an Indian-born player in the Chelsea as legend, scoring goals, assisting and winning. Wow, that's a dream, man. That's a dream. Richard, big up, bro. Big up. Again, remember we are always a fan channel for all to see. We do content basically in Hindi mainly, but we also do in English sometimes. We have multiple kind of panel, be it from across the world. So it'll be great to have you all the time, guys. Again, for that you have to hit that bell notification icon, everyone, and do not forget to check out our second channel as well. Let's see. Hopefully, I know Sunil Chetri. Baichang Bhutia, kahin na kahin, these guys are absolutely legends. I would say I am Vijayan, but again, भाई सादिक भाई का बर्थडे है यार, उन्होंने कंफर्म किया है, तो अभी मैं मैसेज देखो. सादिक भाई ओपी ब्रो, चलो सादिक भाई का बर्थडे है, तो सादिक भाई हैप्पी बर्थडे अगेन ब्रो. Okay, Nkunku, have to say the most exciting player I have had the pleasure to review does not feel like a. I can see why Chelsea. देखिए, I can see that as well. लेकिन Nkunku has injuries, Amandeep. I am concerned वहां पर. Should we have signed Felix? I know बहुत expensive रहता. अगर हम जाने दे रहे Havertz और Mount को, I feel that Nkunku and maybe an Andro Santos as a backup, it's too light. ऑल्दो हमारे पास मैक्सिमम 45 to 50 गेम्स होंगे, कंसिडरिंग हमारे पास यूरोप नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ दैट इट इज टू लाइट. आई थिंक एक चाहिए, जस्ट लाइक इन द मोल्ड ऑफ अ मैडिसन. ऑल्दो स्पर्स इंटरेस्टेड है, आई बिलीव इन मैडिसन मोर देन न्यूकासल एंड चेल्सी. तो भाई मैडिसन और मे बी अ सोबोस्लाई, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव रहेंगे इन माय ओपिनियन. Laporta is a politician, but people should know this, that he never said that he will get Messi at Barca. He never guaranteed his return. Whenever asked, Laporta said he will try 200% to get Messi. Okay. Enzo Lefi, yeah, that could be one more एक link हुआ था हमारे. I think Zakaria and Enzo Lefi have also been linked, but again, are they proven at the highest level? I would rather want such a player. I need some experience. कितने young बंदे भाई, ये फिटिश क्या है भाई, सब 20-25 साल के लोग ला दो और बस. We cannot win trophies with that. Let's be real about it. As much as balance चाहिए, young players भी चाहिए. Declan Rice to Arsenal वोट दिया भाई, क्या हाल है अनुराग? बिग अप यार, बिग अप टू स्पोर्ट फ्रीक ब्रो. एवरीवन डू चेक आउट भाई, हमारे मेंबर चैनल्स भी है, check out our member channels यार. नीचे in the description always tagged. Just takes a second to subscribe to Almighty Sports, Sport Freak, Chelsea Perspective, of course Almighty Blues, and do not forget NS Sports TV and Sports Nathan as well. Milan have offered Marcus Thuram 4.5 million plus bonuses, year contract, and important role Milan squad. Okay, that's good to hear. So Marcus Thuram is the successor of Zlatan Ibrahimovic. Wow. And Giroud kind of takes that role, and Marcus Thuram starter with Origi being a third striker. That sounds good, Amandeep. Yeah, of course, an AC Milan fan in the house. That sounds good. But talking about Milan, I think Daichi Kamada, बहुत दिन हो गए यार, अब कर लो बस. RLC और कमाडा का कर लो बस. I know माल्डीनी गए हैं तो कहीं ना कहीं they do not have time to speak about it, but I think it's high time that they sign Kamada, RLC, and looks like Marcus Thuram. I know they were linked with Chukwueze, लेकिन मुझे नहीं लगता Chukwueze जाएंगे मिलान, in my personal opinion. Arsenal से भी लिंक हुए थे Chukwueze. Again, काफी surprised. Why is Arsenal being linked with left-footed number 8/wingers? Why? मतलब I don't know why. Barella is not leaving. भाई Dishant अपने इंटरनल अल्ट्रा बोल दिया, and I agree with this. I think rather Brozovic, as much as Brozovic I really rate, they might be open to leaving considering Fratesi आ रहा है, लेकिन Barella नहीं चाह रहे. I agree totally. Yes, exactly. Aslani is also there. Aslani का by the way, if I'm not wrong, उसका contract extension करना है. Just saying. Nathan, what's up, bro? Just give you a shout out, bro. What's up? Nice to see you. Yes.
Um, wow, if David goes, I'm gonna feel sick, Ankit. Okay, that's interesting. That's interesting. Okay, Edin Dzeko is getting, yeah, हमने उसके बारे में बात किया है. He's not accepting the extension at a lower wage. He's rather wanting to go to Turkey. So that means that they are desperate for a Lukaku. तो सालो Inter fan, sorry bro, लेकिन it's high time that you guys pay at least 50 million euros for Lukaku, bro. We bought him at what, 100 odd million euros. 50 पे तो दे दो. Lukaku has played well for Inter compared to Chelsea, obviously. Like I just saying, I know 40-50 million दे दो यार लुकाकू के लिए. And I know कुलीबाली के लिए भी है, आपके पास पैसे नहीं है. You don't want him to, we don't want him to go on loan. But why? If you really want those people, get going, bro. Inter. You need those players, in my opinion, and that's surprising. Isliye maybe they have extended De Vrij. They have extended him as well after Skriniar is leaving, right, to PSG. Yesterday, Lautaro told Poch he would be open to joining Chelsea. He is Poch's first choice. Inter needs sales. Potential part exchange for Lukaku नहीं होने वाला. अमनदीप भाई क्या था वो स्वदेश का डायलॉग? मत दिखाई साहब जी, मत दिखाई बाबू, इतने सपने मत दिखाई, मत दिखाई, मत दिखाई. लोटारो नहीं आने वाला. फिर से बोलता हूं, लोटारो बढ़िया प्लेयर एकदम. लोटारो मार्टिनेज इज एन ऑसम प्लेयर ऑन हिज डे, बट ही इज नॉट अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर. Trust me, I watched enough of Serie to tell that. He's not a prolific goal scorer. Plus, he's done better when he plays with a second striker, or rather him being the second striker. वो better रहता है. Will Chelsea play that way under Poch? Time will tell. और भाई 85 मिलियन है उसका मार्केट वैल्यू. अमनदीप 85 मिलियन पे हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, कंसिडरिंग यहाँ पर इंटर सेल कर रही है, और वी ऑल नो द काइंड ऑफ साइनिंग दैट वी मेड फ्रॉम इंटर. तो वहां पर वी ऑल नो दैट. तो भाई क्लोज टू 100 million euros अगेन. Lukaku part 2, we don't want that. I know different player, better player I would say at this point in time, लेकिन again we cannot play one guy. क्या हम चेंज करें अपना स्ट्राइकर फॉर्मेशन? आई रियली डाउट इट, आई रियली डू इट. बट एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई रियली फील कि लोटारो तो रहेगा ही. रादर इंटर को एक और फॉरवर्ड चाहिए, कंसीडरिंग दैट जेको जा रहे हैं एज वेल एज Lukaku looks like it for whatever reason. Although they are interested, they are not interested to give the money. I don't know. भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत सारे लोग मुझे कल के स्ट्रीम में भी पूछ रहे थे, वॉच अलॉन्ग जो हमने किया था भाई फॉर नेशंस लीग. एवरीवन इन द हाउस भाई आपके कमेंट भी दीजिए. तो क्या है ना, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ फॉर पीपल हु आर नॉन चेल्सी फैंस और पीपल हु माइट नॉट नो द न्यूज. तो स्टेक करके है जो एवर्टन की स्पॉन्सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैज बीन फॉर अ गुड व्हाइल. Now Stake is basically, if I'm not wrong, a betting company. Correct me if I'm wrong. Gambling betting website है with a lot of other things that do. So mainly वो है, and they are giving a better deal compared to Allianz. ठीक है. अब but at the same time, because UK में और something EPL में they're not allowed to have betting sponsors after 2025, ये भी रूल है. तो they are just going with a 1-year deal. तो 1 year के लिए Chelsea are agreeing to go with Stake. लेकिन कल से बवाल मचा है अपने सोशल मीडिया में. If you are a Chelsea fan, you know exactly what I'm talking. क्यों? क्योंकि how can a club which definitely यहाँ पर थोड़ा सा मैं I know touchy हो रहा हूँ, but they मतलब Chelsea sacredly follows or rather appreciates every religion, festivals आप देखते हो, social media etc. and the way that things have been doing. So certain obviously religions do not want betting to be part of it. We all know that. लेकिन अगेन विद रिस्पेक्ट टू देम, एब्सोल्युटली नो टू वेज अबाउट इट, फुल रेस्पेक्ट यार, मैं तो बोलता हूँ. लेकिन मेरा ये ओपिनियन है पर्सनली, अगेन मेरे आइडियल्स अलग से हो सकते हैं, तो मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मच. लेकिन हैविंग सीन सो मच ऑफ फुटबॉल एंड हैविंग सीन सो मेनी स्पॉन्सर्स ऑन जर्सीज, आई कुडंट केयर लेस. सच में बोलो, आई कुडंट केयर लेस. मतलब यहाँ पर आप बोलते हो दैट सोशल मीडिया वेबसाइट हो सकता है, भाई सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन होती है. सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन हो सकती है. दैट कैन बी, सोशल मीडिया भी बहुत सारे बुरे चीज होते हैं. That can be your sponsor, but a betting company cannot. I don't understand that totally. Yes, I know कहीं ना कहीं against the principles, but साथ साथ में आप बियर कंपनी को रख सकते हो, आप शराब को आप रख सकते हो नहीं. मतलब कार्ल्सबर्ग का हम सब जानते हैं, लिवरपूल फैंस वुड एसोसिएट विद दैट. मतलब I feel it's somewhere on the line double standards, bro. Simple as that. तो it's about एक पॉइंट बना दिया है चेल्सी फैन ने, खाली बात करने के लिए बातें थी नहीं, तो कल बना दिया बस. सच में मेरा थोड़ा, आई नो पीपल माइट गेट ऑफेंडेड विद दिस, मेरा पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है. और आपको पता है इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. यू कैन अग्री टू डिसएग्री. एट द सेम टाइम भाई हम बोलते हैं जैसे हम सोचते हैं, सिंपल एज दैट. तो हमें ये लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता है दैट गेटिंग अ बेटिंग कंपनी एज अ स्पॉन्सर, इफ इट इज लीगल, व्हाई नॉट? Why not? If it helps the financial things of the club, क्योंकि FFP is a thing for 1 year. Because at the same time there are a lot of clubs who actually, in fact even Chelsea in the past, कि हमने रखा है sponsor beer and भाई alcoholic companies as well as social media companies. These are all addictive things as well.
These are all principle में नहीं है to some people, right? So I'm just saying, तो होता है यार, it's just about what you think at the end of the day. Exactly, बिल्कुल. Dishan, thanks यार, an Inter fan saying that helps for sure. और yeah, रहते को, yeah, they are linked with him as well, absolutely. लेकिन still they need one more striker. They cannot go into a season just with Korea and Lautaro and him. Yeah, they need a fourth striker as well because the system that they play. Remember, अभी भी अपना Inzaghi है, having reached the Champions League final. Allianz looks better than looks के wise में maybe Amandeep you can have some view, but I certainly don't see. अच्छा, by the way, सब लोग यार, big up to everyone यहाँ पर again. Gaurav को special big up है as well as all the other members. Bhai, again, people who are members or people who are going to become members or would want to become members, I would give a shout out to our channels here, Almighty Blues and Almighty Sports. दोनों ही channels में very affordable prices में membership available है, and that membership gives you a lot of perks. You can check it out. You can check with other members that we give the perks and we respond more to them because of their time and money given to us. So it's a lot of things. Plus, member streams are in the line. A lot of things. आप हमारा Discord में नीचे, if you would like to do that in the future, as well as there is competitions etc. going on for members and a lot of daily conversations that we have. So by people do check out our membership schemes as well, our different perks for different levels, but very affordable prices on both the channels. So आप check out कर सकते for people who are members and would like to become members again. You're welcome. Either ways, much love for everyone coming on as well. भाई अभिषेक, काफी बात की यार हमने, काफी बात की. In fact, we have almost covered every club यहाँ पर. Again, I doubt if I have missed any club. Do let me know if you have missed any news. I think we have spoken about Barcelona, be it Gundogan. We have spoken about Zubimendi. Kimmich तो नहीं आने वाला अभी. Now that Declan Rice is not going to Bayern Munich, and again Goretzka also is not leaving. उसने खुद statement दिया है. वहां पर I don't think there's a change at Bayern Munich unless there is a Kim Min-jae coming, which looks likely compared to Manchester United. But हमने ये भी बात किया है striker situation. Bayern Munich, will they go for a Kolo Muani? Will Real Madrid go for a Kolo Muani? Will Chelsea go for a Kolo Muani? मतलब that will be interesting. PSG, ये चारों clubs I think are linked to Kolo Muani. Manchester United looks like they might go for a Højlund or a Vlahovic. जो Chelsea भी interested है, just saying out there, along with Chelsea being interested in Nicholas Jackson from Villarreal. उसके बारे में we have done a little bit scouting discussion वहाँ पर, as well as what will happen to Broja if he goes to Brighton. Will we get Caicedo in return for Broja and Gallagher, which I don't want to see that. Again, Colwill, we are not interested to sell for whatever reason. I would rather, again, Chelsea fans would disagree, but I know that I would rather have people who are already at Chelsea than someone who's not being in Chelsea and yet to prove like a Colwill, as much as I love Colwill and I know he's a future of centre backs for England. But abhi bhi main bolta hu that I would rather, people might totally disagree, it's fine. I would rather keep Gallagher and Broja in the squad than Colwill. Very difficult call, different players altogether. अगर उस पॉइंट पर आ जाती है बात in the negotiation with Brighton for Caicedo, who is a must to come to Chelsea, because for whatever reason हम पालिनिया के लिए नहीं जा रहे. I know Fulham देगी नहीं अपने को, लेकिन पालिनिया getting linked to Barcelona is interesting. अब between पालिनिया and Amrabat, अगर पालिनिया जाता है Barcelona, then Amrabat will go to Spurs, looks like it. और meanwhile Inter, हमने बहुत बातें की है अभी और AC Milan की बातें की, but Man City for whatever reason are letting go one of Bernardo or Mahrez, or if not both, and replacement अभी तक पता नहीं कौन आएगा. लेकिन midfield में Gundogan suddenly looks like he's extending. तब Kovacic क्यों जा रहा है? That is a question mark. As well as Havertz क्यों जा रहा है Arsenal, उसके बारे में बात की है. लेकिन Guardiola to Man City अगर हो जाता है भाई, पागलपंती होगी. Sadio Mane is staying. Yes, he's staying absolutely. Keep Colwill and Broja, sell Gallagher. हाँ, that is probably the best case. लेकिन वो ऑप्शन नहीं है अभी. उत्कर्ष, अभी दो ऑप्शन दिए ब्राइटन. अगेन रिपोर्ट्स है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. उत्कर्ष, द रिपोर्ट्स आर दैट वी विल ईदर टॉक टू ब्राइटन और अदर ब्राइटन विल ईदर टॉक टू अस अगर हम दे रहे कॉल्विन इन रिटर्न और प्लस मनी फॉर अ काइसेडो. सेकंड है कि हम दे रहे हैं ब्रोया और गैलेगर साथ में और कुछ चिल्लर पैसे. मतलब सेकंड वाला तो बहुत ही ज्यादा बुरा ऑप्शन है, नहीं जाने वाला मैं. फर्स्ट वाला ऑप्शन वर्स्ट केस में मैं अलाउ करूंगा. आइडियली लोन, बट इफ सेल करना पड़े तो भाई लाइक गे ही हमें करना पड़े, सिंपल एज दैट. क्योंकि हमारे पास ऑन पेपर तो है, अगर कुलीबाली ठहर जाता तो वी हैव ऑन पेपर अ लॉट ऑफ सेंटर बैक्स. लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खाली बारिशिल होगा, लेकिन वो एक पॉइंट टू बी नोटेड. कुकुरिया कैन बी एन इमरजेंसी वन एट बेस्ट.
No problem, bro. No problem at all. We discussed a lot of things, bro. Big up to Darren. Absolutely, much love to Darren always, and every member, every mod as well, especially if not all the subs as well. Walker concrete target for buying. ये मुझे again, I'm very very surprised, Amandeep. I know that Tuchel has been a fan, but Bayern Munich already have a Stanisic, a Pavard अभी तक technically है, as well as a Mazraoui. क्या कर रहे हैं भाई एक और राइट बैक जाकर? I don't understand that at all. Unless Tuchel जा रहे थ्री द बैक, which can be possibility. और अगेन मैं सरप्राइज दूंगा, बायर्न म्यूनिख फाइट फॉर द यूसीएल दिस टाइम, अर्ली प्रेडिक्शन में दे रहा हूं, नोइंग टुकल। गैलेगर के साथ में हमें 90 मिलियन देना पड़ेगा शायद, क्योंकि 10 मिलियन नहीं भाई, अमनदीप को ज्यादा ही कम बोल दिया भाई। देखिए, ही इज अ स्क्वाड प्लेयर, ही इज एन इंग्लैंड इंटरनेशनल, और ही कैन बी अ गुड वर्क हॉर्स इन अ मिड टेबल टीम फॉर श्योर, एंड ही हैज सम शॉट्स ऑन हिम। तो आई वुड से दैट ही इज बैड in terms of the season, he's sad, but he's not so bad that people make him out to be. गैलेगर अपना कचरा है, और कचरा वाज गुड एट टाइम्स ब्रो इन लगान। तो भाई अपना, मैं बोल रहा हूँ गैलेगर का मार्केट वैल्यू, एंड दैट इज भाई transfermarket.com 40 मिलियन यूरोस एक्चुअली है, 35 से 40 मिलियन यूरोस है उसका। तो अगर हमें मिलता है उससे नॉर्थ, देन आई वुड गो फॉर हिम, अदरवाइज लेट हिम बी इन द स्क्वाड। वी नीड सम स्क्वाड प्लेयर्स एज वेल, सबको स्टार्ट नहीं करा सकते भाई। ओके, रियल मैड्रिड टारगेटिंग करीम एडियमी नाउ। अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग भाई। करीम एडियमी अगेन सरप्राइज, ही इज नॉट लाइक अ टारगेट मैन ब्रो। आई एम सरप्राइज, कहीं ना कहीं वही होगा। अगर एम्बापे नहीं आता तो करीम एडियमी माइट बी योर वुमेन्स एम्बापे, एंड इज क्वाइट गुड, ही कुड प्ले लेफ्टिश फॉरवर्ड एज वेल एज सेंट्रल स्ट्राइकर, लेकिन आई थिंक इज बिट टू यंग टू लीड द लाइन यार, सच में बोलूं तो। लिवरपूल भाई अगेन ग्वार्डियोल के लिए फॉर व्हाटएवर रीजन आई एम हियरिंग कि आपके पास पैसे नहीं है। ग्वार्डियोल बोल रहा है भाई मैं तो लिवरपूल जाने वाला हूं क्योंकि मैं लिवरपूल फैन हूं। तो हो क्या रहा है मुझे पता नहीं। आई थिंक ग्वार्डियोल वुड हैव मेड सेंस. Why doesn't Klopp want to play three in the back at times? I don't understand. There has to be a plan B. As much as Klopp is a legend in terms of management, and I really rate him. People who saw my GOAT content, भाई everyone यहाँ पर जो भी new watchers है ना, first of all do not forget to hit the subscribe button and the bell notification icon. हम लोग बहुत सारा सीरीज भी करते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सीरीज, अ लॉट ऑफ नॉलेजेबल क्विजेस, फन क्विजेस एज वेल। तो डू चेक आउट अपने हुए माई, डू चेक आउट अपने टॉप 5 लास्ट 20 इयर्स प्लेलिस्ट के नाम बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप आइकॉन्स एक्सेट्रा। भाई दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी रेयर, और आप लोग को अच्छा लगेगा भाई। चेक आउट इन योर फ्री टाइम फॉर श्योर। आप लोग रिमाइंडर सेट करके आप देख सकते हो जब भी आप फ्री हो। तो उसमें हमने बात की है काफी उसके बारे में। सेलिंग कॉलवेल इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। आई थिंक इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो उत्कर्ष। Ideally, I would like to keep him. Second case, loan him and then sell. अगर आप बोल रहे हो सेल ब्रोया और सेल कॉलविल, आई वुड से सेल कॉलविल if it comes down to that. That's what I'm telling. For me, Broya has not been given chances yet. Again, yet another forward जो इसको चांस नहीं मिला है. I don't want to see that happening in Chelsea, please. अगर do you see, और वो क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। अपने कॉबम सेक्शंस ना, I love them bro. I love them all. Just because Colwell is English and is a proper Cobham boy, हम back कर रहे हैं. Broya also has been part of the academy. People forget it. Albanian है तो क्या? Broya has been fantastic, bro, in the little spells that he's had. Uska ceiling is right up there. So why are we? I know Poch, if he's backing Jackson, fair enough. But why did we actually keep Broya and David Datro Fofana in the squad? Just to keep loading everyone? Doesn't make sense. It'll be another Dominic Solanke. It'll be another Patrick Bamford. कहीं ना कहीं they lost their way यार in their careers because of Chelsea, you can argue almost. नहीं तो मैं उसके बारे में बोल रहा था डेरिन, एब्सोल्युटली मेरे लिए तो ब्रोया, सेलिंग ब्रोया इज अ नो 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 बिग नो। मैन सिटी जाएगा ग्वार्डियोल, उत्कर्ष बोल रहे। लेकिन आकी का क्या? आकी फिर ही विल बी व्हाट, फोर ऑफ द बैक चेंज कर लेगा वापस ग्वार्डियोल और प्लेज आकी लेफ्ट बैक। देन आकी डिजर्व्स अ स्टार्ट ब्रो। आई नो कहीं ना कहीं मैन सिटी आर वेरी गुड इन रोटेटिंग टीम्स एक्सेट्रा, बट बैक लाइन इतना ऑफन रोटेट नहीं हो सकती। How many forwards do Brighton need? Pedro, bro, yeah. That's a point. That's a point. कहीं ना कहीं maybe they are got offers from maybe elsewhere as well. Ferguson भी है, याद रखिए. Colwell really wants to play for Chelsea. I don't think so. Exactly. That is another point. Sushan, brilliant point. Brilliant point. Absolutely. मुझे इसलिए लगता है ना, आई वुड रादर अ ब्रोया देन अ कॉलविल। अगर एक बंदे को ही रख सकता है, नो फॉरवर्ड वर्सेस डिफेंडर बात हो रही है, बट एनीवे अगर इफ इट कम्स आउट टू दैट एंड इफ वी रियली वांट काइसेडो, व्हिच वी डू एक्चुअली. Colobon is 90 million, Caicedo is 100 million. How come these one season wonders get valued so high? Market broke already. Nahi, so not Mourinho. It's basically because a forward who's an international forward for France, which is arguably one of the better teams in the world, gets that. Simple as that.
Alvarez again, Pep, because of Pep, they are able to manage that. Pep is that manager who's able to keep people happy. Not every manager could do that. So kudos to Pep. Of course, Pep has become that legend now that players are willing to wait. Again, Kovacic is a proof. Kovacic को शायद पता भी होगा, शायद गुंडोगन शायद नहीं छोड़ रहा सिटी, फिर भी he's open to going to City. I don't know what to say वहां पर. अगर गुंडोगन चला भी जाता है, फिर भी याद रखिए कैल्विन फिलिप्स है वहां पर. आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो. कैल्विन फिलिप्स वाज इंजर्ड फॉर द लास्ट सीजन ऑलमोस्ट. तो मैं कोवाचिच जाना इज वेरी सरप्राइजिंग. बट अगेन मैंने बोला था कि ब्रो इमीडिएटली स्टार्टेड. यस बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल ही डिजर्व दैट. वो इंजरी रॉन्ग टाइम पे आ गई कहीं ना कहीं. फ्रेंडली में आई थी यार. कैन यू बिलीव इट? ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप in 2014 a Chelsea manager managed the world 11. Yes मैंने देखा है. Poch did that as well. Absolutely. Martin loan यार. Looks like लोन होने वाला है डेरियन अगेन. लेकिन कहाँ होने वाला है? थिंग्स आर येट टू बी डिटरमिन्ड. मैन सिटी लपोर्ट को सेल करेगी अगर ग्वार्डियोल. हाँ लपोर्ट को करेगी, लेकिन आकी और ग्वार्डियोल दोनों एक्सपेक्ट करेंगे टू स्टार्ट. व्हाट देन? दैट्स द होल पॉइंट. आई नो रोटेशन होगी, दैट एक बंदा को तो मिलेगा ना, दैट योर माय मेन लेफ्ट सेंटर बैक. जैसे इस सीजन में आकी था ओवर लपोर्ट. तो कौन होगा वो बंदा? मे बी बिकॉज ग्वार्डियोल इज वेरी यंग, मे बी बिकॉज इट्स ही शिफ्टिंग लीग्स. बोलेंगे कि ग्वार्डियोल तू थोड़ा slowly but steadily come into the team. Maybe that might be the plan, but I feel that he's ready. He actually is. Avinash Tech, what's up, bro? Again, big up to all the members and people again who have been members who can or want to renew. You can check out. मैं वापस से a lot of perks. I know we are trying to follow, as well as yes, a lot of things. Otherwise, we are looking at a meetup as well, especially people in Bangalore. People do let me know on that, as well as जो भी लोग basically has not subscribed to Almighty Sports, consider doing that, because there's a lot of content coming in the next years, not that we covered already entire season and a half. Why sports? Yeah, that's a big question. Again, therein काफी चीज हमने बात की है इसके बारे में. My bro joined late, but कोई नहीं. No big star striker will come to Chelsea. आना भी नहीं चाहिए, to be very honest. Time is gone. I think हमें चाहिए proven, but star striker की जरूरत नहीं है unless he's like the absolute best. अगेन बट कोई नहीं यार. बिग अप टू यू भाई. पोस्टेकोग्लू यहाँ पर जी भाई जब थे हमने बात नहीं किया था, बट आई थिंक लॉन्गले के बारे में बात नहीं किया था. लॉन्गले का लोन हैज एंडेड. So right now, as things stand, I think he's going back to Barca, but Spurs are in talks. So remember, यहाँ पर बहुत सारे people are linked. Richarlison, he's ready to go to Real Madrid, लेकिन he's ready to stay at Spurs. I think he'll stay at Spurs. लेकिन मुझे लगता है that Amrabat से link हुआ very strange है, because what about Højbjerg? Højbjerg has been a very good player for them. I am really surprised with me. But देखते हैं Postecoglou. Time will tell. Certainly, I would not like to claim कि यार मैं Celtic के games देखता हूँ बहुत. ठीक है, तो time will tell. लेकिन as per what I've studied, I think he looks like a good manager, one that we had definitely targeted as well for whatever reason. But that's how it is. चलो रोमियो लाविया. Competition from Liverpool, Chelsea, Manchester United है आर्सेनल के लिए. चलो, I think Romeo Lavia, Caicedo to Chelsea looks likely, unless Declan Rice for whatever reason does not go to Arsenal and goes to Bayern Munich, जो मुझे नहीं लगता होगा. तो I think Caicedo और Romeo Lavia आएंगे Chelsea. और यहाँ पर again we have literally discussed other clubs and by the way, Barca fans यार, Carrasco again going back to it, याद रखिए एक leftish player आपको चाहिए एक. तो वहां पर Carrasco can be a guy who could play in midfield as well as wing. For me, Carrasco is not a bad bet for me if I am a Barca fan. But आप लोग बोलिए absolutely. लेकिन और क्या हमने, I think I'm just taking a look at if I missed some news in the last 24 hours जो है. But भाई everything we have covered almost. Yes, हमने literally हर एक नाम cover कर लिया है from what I see. Again, people have joined late. Do not forget to see the beginning part of it. हमने काफी सारे अपडेट्स दिए, काफी सारे व्यू पॉइंट्स दिए हैं, आपके कमेंट्स लिए हैं. ऑफ कोर्स काफी स्टार्ट कमेंट भी थे बीच बीच में, मैं लिया हूँ. अगेन about Vegas is not someone that I see as a startup, bro. Abhishek, Jonathan David, a big move, yes. Lekin which is that club willing to make that big move? I won't be surprised if a club like Chelsea finally goes for him now that Thuram is now not coming, as well as looks like others are very expensive. Walker नहीं जाने वाला in my opinion, क्योंकि I think इतने सारे आउटगोइंग नहीं हो सकते सिटी के साथ, एज मच एज दे वन द ट्रेबल. हाँ, ये वाला डेफिनेटली ऑन है, किम मिन जाए वाला. एंड डेक्लन राइस टू मैन सिटी भी, आई थिंक इट्स मोर अबाउट डेक्लन राइस का जो कैंप है, दे वांट टू इंक्रीज हिज प्राइस सो दैट आर्सेनल बिड. दैट्स व्हाट द secondary news is. But agar City really are going for him, they'll get him. But then why is Kovacic going to City? Again, I don't know. But again, yaar, dekhte hain what happens. City are doing really a madness already. But Neymar to Manchester United, I really don't see that. I genuinely believe that they need a center forward
more who could play in the wing rather than someone who's playing more in the wing who can play center forward. तो आई थिंक वैसा एक प्लेयर चाहिए उन्हें. और एम्बापे कैन बी वन, लेकिन एम्बापे का वो थर्ड चॉइस होगा फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फॉर दिस कमिंग सीजन एटलीस्ट. अगेन बहुत हाई है मुबाशिर, उसके बारे में हमने काफी बात की है, बट देखते हैं क्या उसका प्राइस रहेगा. दैट्स अ बिग क्वेश्चन. बट कोई नहीं यार, मच लव फॉर एवरीवन. अगेन right back situation of Madrid is going to be interesting for sure. I think Cancelo might be one, Gurjot. I really believe Cancelo की हमने बात नहीं की ज्यादा. Cancelo in the end might be one. I know आज Alphonso Davies की बात हुई है, but he will come only if Bayern let him go. Secondly, if Mendy goes. मुझे नहीं लगता लेफ्ट बैक में कुछ चेंज होगा कंसिडरिंग फ्रान गार्सिया आएगा. राइट बैक में आई थिंक मैड्रिड के लिए Cancelo on loan again I'm seeing it's quite a possibility. बट देखते हैं भाई. एवरीवन बिग अप यार. अगेन काफी देर हो गई, तो आई विल एंड द स्ट्रीम राइट नाउ. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टार्ट कमेंट्स एज वेल एज लॉट ऑफ कमेंट्स. अगर आपका नहीं लिया कमेंट भाई अपॉलॉजीज, लेकिन मच लव, ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. लेट्स हिट दैट लाइक बटन भाई. 350 लाइक्स होने चाहिए स्ट्रीम में, ठीक है एवरीवन. एंड मिलते हैं कल एज वेल एज डेली. यू ऑल नो ऑन बोथ द चैनल्स, ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. लव यू ऑल.